तो मेरा पेन कहाँ पे, राइट, दिस इज जेई एडवांस 2013 पेपर 1, इसको सॉल्व करने वाला हूँ। एंड ये पूरा मतलब मैंने पहले कभी ये सॉल्व नहीं किया है। दैट इज मैंने पहले कभी भी कोई भी इनफैक्ट पास्ट ईयर पेपर सॉल्व नहीं किए, तो मेरे लिए कम्प्लीटली नया है। हो सकता है मैंने कुछ प्रॉब्लम्स ऑलरेडी मुझे पता हो तो शायद से वो फास्ट हो जाए, वो मुझे नहीं पता, बट एक्चुअली मैंने सॉल्व तो नहीं किया है। सो आई होप कि ये यानी एक्चुअल में जैसे मॉक टेस्ट होनी चाहिए वैसा हो, राइट। हाँ, और हो सकता है कि तुम लोग कुछ भी समझ में ना आए कि मैं क्या कर रहा हूँ, और वो तुम्हें आना भी जरूरी नहीं है बिकॉज मैं खुद के लिए कर रहा हूँ, राइट। या मतलब क्यों तुम ये क्यों देखोगे कुछ एजुकेशन लेने के लिए, राइट। मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा मुझे अटेंशन रहे, राइट। मैं इस बार में अटेंटिव रहूँ कि मुझे सॉल्व करना है फास्ट, राइट। अल्दो एडवांस तो फास्ट करने का नहीं है अपना मोटो, वी हैव टू सॉल्व विद एक्यूरेसी, बट जो भी है फिर ठीक है। जब जब मैं इसको क्लिक करूंगा पेपर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो पेपर है, ये अनसॉल्व पेपर है, दैट इज इसमें आंसर्स नहीं है। तुम्हें एनटीए की वेबसाइट, एनटीए नहीं क्या था, जो भी उनकी वेबसाइट थी, वहाँ पे तुम्हें आंसर्स के साथ में मिलता है पेपर, एंड मुझे वैसा नहीं चाहिए था। तो कोई तो भी एक दूसरी वेबसाइट थी, वहाँ पे तुम्हें ऐसे एडिटेड पेपर्स मिलते हैं जहाँ पे ये अनसॉल्व रहेगा, दैट इज की वो जो आंसर्स है वो उन लोगों ने बाहर निकाल दिए, राइट। राइट, और या मैं कुछ बोलूँगा नहीं। और मैं वैसे लाइक हैबिट है कि मैं खुद से बोलता हूँ थोड़ा सा फॉर जस्ट अलर्टनेस, राइट। या उसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है। तो वो जो मैं बोल रहा हूँ वो एक्चुअल में इम्पोर्टेंट नहीं है। सो एक्चुअल में ये शायद से मुझे साइलेंट करना चाहिए था पूरा वीडियो, बट वट एवर, मैं इसको विद वॉइस करने वाला हूँ बिकॉज क्या पता वो बेटर होगा कि नहीं, राइट। ठीक है फिर, लेट्स एक्चुअली स्टार्ट। ओके सो लेट्स गो। सो पहले फिजिक्स है, फाइन। 1 2 3 वी स्टार्ट। ओके, the diameter of a cylinder is measured using vernier capital with no error. It is found that the zero of the vernier calipper no error बढ़िया। Okay, that vernier scale lies between 5.1 centimeter and 5.15 centimeter of the main scale. अच्छा, zero of the vernier scale. What? Oh, okay, I get it, I get it. Okay, on the main scale, the vernier scale has 50 divisions equal to 2.5 centimeters. Okay, equivalent to 2.5. Wait. So हर एक division equal to 2.45 centimeters थी क्या? I don't know. The 20th division of the vernier scale exactly coincides with one of the main scale divisions, the diameter of a cylinder is. So अपने को राइट मेन स्केल पे कहाँ पर है वो दिया हुआ है, बिटवीन 5.1 एंड 5.15, राइट। और अपने को और क्या दिया है, वर्नियर स्केल हैज 50 डिविजन्स इक्विवेलेंट टू 2.45 centimeters. The 24th division of the vernier scale exactly wait, so 50 divisions combined है ये, ठीक है। क्या 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 करूँ मैं, वेट, एंड अपने को क्या, ओके ये ऑलरेडी 5.1 centimeters है, सो एक, या ओके व्हाट दैट मींस इज द एक डिवीजन, सो 1 bst is what, this upon 50 of course, like 2.45 upon 50 which is like कितना होता है, 4.9 upon 100, yeah, इतने centimeters which is, yes, this is like 0.4, so 0.0049 centimeters. So that's 1 bst। और मैं क्या बोला है, the 24 division, so division of the vertical scale exactly consists one of the main scale division जब अपन मेजर कर रहे थे, आई गेस। ओके, और ये क्या बोला है इसमें, राइट। द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन दिस एंड दैट, तो जीरो के बीच में वेट कुछ भी अजीब होता है इसमें, लाइक एम एस टी प्लस समथिंग, और फिर ये सेंटीमीटर ऑफ द मेन स्केल। सो ये जो मेन स्केल है उसमें, सो 1 एम एस टी इज जस्ट इक्वल टू 0.05 सेंटीमीटर्स। सो मिलीमीटर में कन्वर्ट करा दो, सो दिस विल बी व्हाट, right? Okay, this is 10 power negative 2 because it's like this will just be 0.49 millimeter, so 1 bsd 0.49 millimeter, and this thing is what, thing is 0.5 millimeter। और क्या करना है अपने को, सब को वन bsd, okay। The 24 division of the vernier scale exactly coincides with one of the main scale division, so um, right, so like length and all this is getting weird because ये स्टैंडर्ड तो है नहीं, स्टैंडर्ड नहीं है, फिर मैं फॉर्मूला नहीं निकाल सकता इसका। सो
ओके इन्वर्जन स्पिन ऐसी होती है यहाँ पे, ये ऐसा है. सो राइट 0 जो है दैट इज बिटवीन दिस एंड दैट वी नो, और 24 डिवीजन ऑफ दिस थिंग एग्जैक्टली लाइज बिटवीन दैट, और ये जो है राइट. ओके सो कितने इसमें मेन स्केल डिवीजन रहे होंगे, आई हैव नो आइडिया एक्चुअली, बट this is weird. Okay, this is very weird. It's between that, right? So कौन से इस पे एग्जैक्टली मैच अप हो रहा है आपने को वो देखना पड़ेगा. ओके फाइन देन सो एक भी ऐसी टाइम्स पूरी जो स्केल है विच इज so 24 division, right? So 24 upon God, okay, 24 times this thing, so 0.49 millimeter. That is ये वाला डिस्टेंस, क्या क्या कर रहा हूँ मैं, डिस्टेंस ऑफ ये प्लस ये इज इक्वल टू 1, so like n times t. It's just not good. Okay, think about it. जो एक्स्ट्रा लेंथ है, हाउ डू यू फिगर दैट, और ये स्टैंडर्ड है नहीं. आह some other way कुछ भी ऐसा होगा ना, वर्नियर स्केलेटर विद नो जीरो, भाई स्टैंडर्ड समझना है तो प्रॉपर्ली करना पड़ेगा. 24 टाइम्स 0.49 मिलीमीटर पर कर सकते हैं, ये लेंथ हो जाएगी. और यहाँ पे जो ये लेंथ है, दिस इज जस्ट अपने को पता नहीं है इनफैक्ट, बट ओके दिस प्लस जो एक्चुअल लेंथ है, सो दिस थिंग प्लस द लेंथ इज इक्वल टू समथिंग लाइक n टाइम्स msd, राइट. या और जो लेंथ है दैट इज बिटवीन व्हाट, दैट इज बिटवीन 5.1 centimeter and 5.15 centimeters, जो कि मिलीमीटर में कन्वर्ट हो गया 51 to 51.5 millimeters, right? Okay, so this is equal to n times of the MSD, which is just 0.5 millimeter. इसका मतलब क्या हुआ, L is equal to 0.5 times n minus ये सारी चीज times n minus 24 times 0.49, right? Well, of course L belongs to this thing, so अपने को at least 51 तो चाहिए रहेगा. So 51 प्लस ये चीज़ क्या हो जाएगा, अच्छा 24 टाइम्स 0.4 तो करना ही पड़ेगा, और किधर का दिस इज 0.5 माइनस 0.01 कर सकता हूँ. 0.5 टाइम्स दिस इज जस्ट 12 and then minus 0.01, so just want 0.24 it seems. Yes, so that should be the thing, which means this is a yeah, just the negative and positive over here, that will be the thing. So अपने को ये मिल गया, and then we have to add this to 51 और 51.5 to see कि क्या हो रहा है, और इनफैक्ट अपने को डबल करना ही पड़ेगा. सो वैसे भी सो इंटरेस्टिंग, विच मीन्स अगर मैं इसको डबल करता हूँ इट्स 102 to 103, और फिर ये जो चीज़ हो जाएगी दैट्स जस्ट नेगेटिव 24 एंड देन वेल ओके दिस वाज वियर्ड, जस्ट 1 माइनस 0.02 यानी कि 0.48 आएगा इसमें, राइट. या सो ये चीज़ एंड देन प्लस ये वाली चीज़ विच इज एक्चुअली व्हाट 12 नहीं 24 माइनस 0.48, राइट. या सो जो एक्चुअल लेंथ है दैट इज इन दिस रीजन, कूल. तो ये हो जाएगा कितना, प्लस 40 अपन कर डालते हैं, विच इज 150 to 151 माइनस 0.48, ये इस रीजन में रहने वाला है. ओके एंड दिस इज एक्चुअली सम काइंड ऑफ इंटीजर, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग, इजंट इट? या सो दिस इज एक्चुअली इक्वल टू n. तो कौन सा ऐसा इंटीजर जो कि इस रीजन में रहता है, इट्स सो लाइक यानी कि 150 पॉइंट समथिंग एंड देन 149 पॉइंट समथिंग के बीच में, तो एक ही है 150. सो n इक्वल टू 150, दैट्स व्हाट यू गॉट. मतलब उसको बस इसमें पुट कर दो एंड देन यू गेट l, कूल. सो n इज जस्ट 0.5. ओके ये करना पड़ेगा आपको. सो हाफ ऑफ थिंग व्हिच इज जस्ट आई थिंक 75 बिकॉज़ 2 टाइम्स 14, यस या, एंड देन माइनस ये चीज व्हिच इज अब अपन ये कर चुके जस्ट माइनस 12 प्लस 0.24, right? This will be what? 63 because yeah 60 plus 60.25, that should be the thing. Okay नहीं है इसमें, क्या कर रहा हूँ मैं गलत, this is not 75. okay क्या गलत हो गया मेरा, इसमें तो गलत हुआ बट क्या गलत हुआ. However 24 था, it was not 48, it was 24. so अब जब इसमें ऐड होगा it should be this thing 1 2 6 comma 1 2 क्या है ये 7, राइट. फिर माइनस ये जो भी चीज़ है दैट्स इक्वल टू 10. तो 125 पॉइंट समथिंग एंड देन 126 पॉइंट समथिंग, तो बीच में का कौन सा है 126, n इक्वल टू 126 एक्चुअली. क्या करिए. ओके सो अब मैं वो चीज़ पुट कर सकता हूँ. सो व्हाट यू वांट इज 1/2 ऑफ दैट व्हिच इज 63 and then minus 12 plus 0.25, that's our answer I think.
तो ये हो जाएगा क्या 51 प्लस 0.25 so 51.25 yeah millimeters so actually it should be 5 yeah 51.25 मतलब कि 5.125 which okay B looks correct so yeah just B is the answer first answer B का डालते हैं second answer okay second is a ray of light traveling in a direction something is on the plane mirror after reflection it travels along the direction something the angle of incidence is so initially क्या था इसका oh this is like okay so 1/2 and then comma so 3/2 मतलब 60 degree with respect to x-axis और अब बाद में क्या होगा negative 60 degree that's what x-axis so such a deflection हुआ that's of how much 120 degrees right so जो okay okay this is actually yeah I understand क्या हो रहा है इसमें so ये 60 था और फिर ये 60 था मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा 30 डिग्री so that's A okay that's A next question next is um, in the Young's double slit experiment using monochromatic light of wavelength part difference responding to any point having half the peak intensities what half the peak intensity RT का तो फिर अपना जो वो फॉर्मूला क्या था so the phase difference अपन पहले देख लेते हैं so for that you just have like I is equal to I naught plus I naught और फिर वो minus 2 square root of RT के ना 2 RT के ना दोनों स्लिट सेम इंटेंसिटी के बोल दो उसमें just 2 I naught क्या चाहिए like okay it's just I naught times 2 times 1 minus cosine of phi where phi is the phase difference ये क्या हो जाएगा I naught then at times of 4 और फिर यहाँ पे sine square of 2 the thing is this is what corresponding wait what uh okay so corresponding to any point having half the peak intensity peak means ठीक है ना so 4 I naught sine square of 5 so sine square of 5 should just be half which means sine of 5 equal to 5 45 degree right 45 degree मतलब कि 5.4 so मतलब क्या जो 5 है just equal to 2 pi upon lambda times the part difference so the part difference sit I don't know so capital D ah part difference so difference जो part difference होता है it's just lambda upon 8 right which is what so y upon capital D times small d is equal to lambda upon 8 or so it seems yes looks good so अब हम क्या कर सकते हैं we can figure out what okay अपने को करना क्या है इसे corresponding to having half the peak intensity is part अपने को सिर्फ part difference ढूंढना है which is of course is lambda upon 8 और okay ठीक है so 2n plus 1 वगैरह बिठा देते हैं so actually it should be you know plus minus pi upon 4 चाहिए यहाँ पे and then 2n not just okay n pi that's equal to what 2 pi upon lambda times the part difference so the part difference is what pi तो मर गया this is just so this will be like 2n plus minus 1 आ रहा है यहाँ पे पहले तो it's just some kind of odd number we don't care about it's like just odd upon 2 और फिर इसको नीचे so 4 and then odd lambda upon 4 right so that's going to be B next question next fourth question fourth is two non-reactive atomic ideal gases have their atomic mass in the ratio something the ratio of the partial pressures when enclosed in a vessel kept at constant temperature is this thing the ratio of the densities yeah non-reactive monatomic ideal gases so same ideal group okay have their atomic masses in the ratio this is okay so let's say gas A gas B की बात करें दोनों क्या है मोनो एटॉमिक बढ़िया their masses are in the ratio so atomic masses are in the ratio 2:3 if the ratio of the partial pressures when enclosed in a pressure okay it's just 4:3 ठीक है the ratio of the densities is RT तो P equal to RT यानी P equal to क्या C RT बोल दो so RT is same as P proportional to C but then C is what like moles per volume अपने को क्या चाहिए चुनना so moles is just the mass upon the molar mass upon the volume is just the density times sorry yeah mass upon the density right yes so this will just be what rho upon m so constant is just rho upon m yes density upon molar mass yeah looks good so इसका मतलब क्या हुआ कि इनकी जो densities है those are like so constant is proportional to this thing which is proportional to p so this thing's density is proportional to p times of n so just 8 is to 9 right so D is the answer next question fifth क्या है
Two rectangular blocks having identical dimensions can be arranged either in configuration 1 or configuration 2 as shown in the figure. One of the blocks has thermal conductivity K and other has 2K. The temperature difference between the endpoints of along the axis is the same in both configurations. Take 9 seconds to transport certain amount of heat from the hot end, okay, to cold end. In configuration 1, the time to transport the same amount of heat in the configuration 2 is, अच्छा तो इसमें हीट ट्रांसफर करने के लिए तुम्हें 9 सेकंड लग रहा है, देन इसमें तुम्हें हीट ट्रांसफर करने के लिए क्या, ओके फाइन फाइन फाइन, और क्या बोला है, कुछ बोला है इसमें, one of the blocks is centimeter, okay, temperature difference between the ends along the x axis is the same, अच्छा तो ये T है, ये T2 है, ये T1 है, ये T2 है, राइट, ओके कूल, awesome. So conduct, yeah, like जो heat flow है, this is equal to what, so हर ब्लॉक के लिए तुम बोल सकते हो, क्या कर रहा हूँ मैं, okay, let's do the proper way. So K is our conductivity times the area जो कि depends K A और क्या था, डेल्टा T, राइट, और कुछ हाँ अपॉन L, so upon the length which is okay depends, okay, then डेल्टा T, ठीक है. So पहले ब्लॉक के लिए और डेल्टा T तो सेम होगा, so we don't care about that. पहले ब्लॉक के लिए क्या हो रहा है, so हमारे हीट फ्लो सेम है थ्रू आउट, लाइक so H is equal to what, K टाइम्स एरिया भी तुम्हारा अच्छा A बोल दो, so K A अपॉन L डेल्टा T तो इसमें चेंज हो रहा है ना, यस, इसमें डेल्टा T1 और डेल्टा T2 बोल देंगे, so डेल्टा T1 is just what, HL अपॉन KA, और फिर डेल्टा T2 क्या होगा, HL अपॉन 2KA, so that's equal to complete डेल्टा T, राइट, तो ये क्या हो जाएगा, like okay, so H1 बोलो, H1 and then 1 plus 1 upon 2 is 3 upon 2, so 3 upon 2 H1 L upon KA is equal to delta T, right, okay. और दूसरे इसमें क्या हो रहा है, so जो हीट फ्लो है, और यू कैन जस्ट से ठीक है, H1 is equal to 2/3 of delta T KA upon L जो भी है, and then दूसरे के लिए इसके थ्रू हीट फ्लो कितना है, that will just be what, 2KA upon L delta T, फिर दूसरे के लिए ठीक है, तो add to just 3. This is a H2 is H2 में 3 आ रहा है, इसमें 2/3 आ रहा है, अब तक चाहिए क्या है, so H1 is to H2 अपने को मिल गया, is just 2/3 is to 3 यानी कि 2 is to 9 basically, very weird, ठीक है, अपने को करना क्या है, so basically क्या 1 upon T1, ठीक है, तो फिर that means is T1 is to T2 is 9 is to 2, right, तो अपने को बोला था, right, it takes 9 seconds, okay, in configuration 1 में 9 seconds लगे, दूसरे में 2 seconds लगे, so let's see. Next question, sixth is a pulse of light of duration something is absorbed completely by a small object initially at rest. Power of pulse is this thing and speed of light is this thing. The final momentum of the object is pulse of light duration something absorbed completely by small object initially at rest. Power of pulse. So power दी अपने को, right? So power times time अपने को मिल जाएगा, ठीक है समझा. Yeah, like yeah, okay, that looks cool. So this times that यानी कि कितना, this is what, this is milliwatts, seriously, so just 3 times 10 power negative 2 times so ये कितना nanoseconds में, बहुत ही बढ़िया, 10 power negative 7, 3 times 10 power negative 9, right, okay, इतनी energy है, and then speed of light is this thing, the final momentum of the, so oh okay like this, fine, so हर photon के लिए just have the energy is just h times the frequency, like hc upon lambda, but then h upon lambda is just the momentum, so momentum times c, right, Einstein का equation of course, so just E equal to pc, तो हर photon के लिए ऐसा है, which means कि this is equal to n E times pc, right, sorry, n times pc, so n times p is the total momentum, so that upon, yeah, so ये thing upon c, that's our momentum, right, this is just 3 times 10 power 9 negative 9 upon 3 times 10 power 8, which is 10 power negative 17 in SI units. So 1 times 10 power negative 17 kg meter per second. Yes, so B is the answer. Next question. 7th. A particle of mass something projected from the ground with an initial speed u at an angle alpha with a horizontal at the highest point of its trajectory. It makes completely inelastic collision with another identical particle which was thrown vertically. What? Just thrown vertically upward from the ground with the same initial speed u naught. अच्छा इसको ऊपर फेंका एंड देन इसको तुम फेंक रहे हो विद एंगल अल्फा, हाँ, inelastic collision, okay, this is very weird, at the highest point, oh, and at the highest point it just has this u naught in the horizontal direction, right, wait no, u naught cosine alpha in the horizontal direction, और ये जो दूसरा पार्टिकल है इसका u naught ऊपर है, ठीक है,
द एंगल, वेट नहीं, ग्राउंड पे तुमने यू नॉट, ओके वेरी वियर्ड, तुमने ग्राउंड पे, वी कैन स्टिल फिगर आउट कि यहाँ पे क्या एनर्जी होगी, बिकॉज या ओके नॉट दैट बैड। एनर्जी कंजर्वेशन करो, अरे फिर ये तो बहुत ही ईजी है, क्योंकि ये भी तुमने यू नॉट से किया ना, दोनों का कंजर्वेशन इक्वेशन सेम आ जाएगा, मतलब कि ये भी यू नॉट कोसाइन अल्फा होगा। इंटरेस्टिंग। सो ये भी यू नॉट कोसाइन अल्फा है, जस्ट ये ऊपर है, राइट। हाँ वेट, तो फिर ये ऊपर यू नॉट साइन अल्फा था, तो फिर वो कैसे चेंज हुआ? हाँ मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे यू नॉट कोसाइन अल्फा है, वो थोड़ी चेंज हुआ है। वेट, इसकी एनर्जी तो चेंज हुई लेकिन, हाँ तुमने स्टार्ट अलग एनर्जी से किया था, दैट ओके वर्टिकल एनर्जी से किया था, दैट्स व्हाई दिस हैपेंस। द एंगल दैट द कंपोजिट सिस्टम मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल इमीडिएटली आफ्टर द कोलिजन, ठीक है ना, 45 डिग्रीज, यस। सो पाई अपॉन 4 व्हाट, सेवंथ आंसर ए, इमीडिएटली आफ्टर कोलिजन, horizontal, right? Yeah. Okay, next question. The work done on particle of mass m by a force something, okay, being impossible. When the particle is taken from the point something to something along a circular path of radius a, what? Along a circular path of radius a. अच्छा तो a comma 0 मतलब ये, okay, and then 0 comma a which is okay, तो ऐसा जा रहे हो along a quarter circle, okay, about the origin in the xy plane is, ठीक है, तो फिर आपने को क्या दिया, k is equal, so force is this thing, इसको पहले रेडियल कन्वर्ट करो, so अच्छा, so you know k xi plus y j, that's just k r hat, so k r hat upon what is this, r power 3 upon 2, sorry नहीं, r power 3 है, सिर्फ r power 3 है, so then this is yeah, like kr vector upon r power 3, that's the force which is of course in the radial direction, wait what, it's in the radial direction, ah come on serious, it's just in the radial direction, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई वर्क ही नहीं हुआ, जीरो। डी, नेक्स्ट क्वेश्चन, because जो तुम्हारा dx रहेगा, okay, I really have to explain this next. One end of a horizontal thick copper wire of length something, radius something, are welded to another end of horizontal, okay, to an end of another horizontal thin copper wire of length L, radius R, when the arrangement is stretched by applying forces that towards the ratio of the elongation in the thin wire to that of the thick wires, tension same है तुम्हारा, so like क्या क्या तुम्हारी चीज है, so copper और अनदर कॉपर वायर ही दोनों, सो ए और बी बोल दो, तो जो पहला है उसमें तुम्हारा रेडियस किस रेशियो में है, सो इट्स 2:1, ओके, फिर लेंथ जो है दैट्स इन द रेशियो 2:1, वंस अगेन तुम्हारा जो एरिया दैट्स इन द रेशियो 4:1, ओके इंटरेस्टिंग। सो क्या इक्वेशन रहने वाला अपना जो, व्हाट डू यू वांट बाय द वे, राइट, सो टेंशन अपॉन एरिया times 1 upon Young's modulus, that's our strain, and this times the length, so अपने को proportional मिलेगा L upon A से, so L upon A is the delta L जिससे proportional रहने वाला, which is 1/2:1, which is like 1:2, so इसका मतलब क्या हुआ, that 1:2 यानी कि जो दूसरा वाला है केस मोड एक्सटेंशन, so अपने करना क्या है, the ratio of the elongation of the thin wire ये वाली है ना, right, that in the thick wire is 2। next question, next, the image of an object formed by the, ये बहुत जल्दी नहीं हो गया, अपने 10 क्वेश्चंस पर आ गए अपन डायरेक्टली, ओके, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ओह नहीं जल्दी नहीं हुआ बिकॉज ये पूरे 3 घंटे का लगाया मैंने, फाइन, इमेज ऑफ एन object formed at by a plano convex lens at a distance of 8 meter behind the lens is real and is 1/3 the size of the object, at a distance 8 meter behind the lens, अच्छा तो u जो है that just -8 is real and 1/3 the size of object, so अपने को जो मैग्निफिकेशन दिया है, राइट, रियल है, और ये क्या प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो भूल जाओ, कॉन्वेक्स है बेसिकली, मतलब कन्वर्जिंग लेंस, राइट, ओके, इमेज ऐसी है, सो रियल मतलब कि इस साइड पे बन रही होगी, या मतलब कि वो इन्वर्टेड हुई, राइट, दैट्स द वे इट इज ऑफ कोर्स, राइट, सो इट इज inverted and real, okay, 1/30 size of magnification, just -1/3, that means, okay, the wavelength and magnification is just v upon u, of course, okay, the wavelength of light inside the lens is 2/3 times the wavelength in the free space, हाँ ठीक है ना, तो अपने को म्यू दे रहे हो बेसिकली तुम, रेडियस कर्वेचर ऑफ कर्व्ड सरफेसेस, ठीक है ना, बेसिकली अपन एफ ढूंढने के लिए, व्हाटएवर, सो अपने को बोला क्या है, the wavelength of light inside the lens is 2/3 times the wavelength in the free space,
सो फ्रीक्वेंसी सेम रहने वाली है, मतलब कि स्पीड इज 2/3 द फ्री स्पेस. सो सी अपॉन वी मतलब कि क्या हो जाएगा 1/2, 3/2. सो जब अपना म्यू है जस्ट इक्वल टू 3/2. ओके, और क्या बोल रहे हैं. सो वी अपॉन यू अपने दीजिए, यू इज जस्ट -8. सो वी विल बी व्हाट 8/3. सो वी इज 8/3, यू इज दिस थिंग. जस्ट ये यूज करते हैं. सो फाइनल तुम्हारा क्या आ गया इंडेक्स. फाइनल तुम्हारा 1 है, राइट. ओके, सो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू. सो अपन पहले सर्फेस की बात करते हैं, इट्स प्लेन. तो इधर से उधर गए फर्क नहीं पड़ता बिकॉज आर इन्फिनिटी है. इधर से इधर गए. सो 1 माइनस म्यू अपॉन तुम्हारा रेडियस ऑफ प्रेशर विच इज एक्चुअली नेगेटिव आर बिकॉज वो उल्टा जा रहा है, विच मीन्स इट्स लाइक म्यू माइनस 1/r, राइट. या तो बस पुट कर दो इसमें चीजें. सो म्यू माइनस 1 कितना होगा 0.5. 0.5/r is equal to 1/v minus 1/u, which is 3/8 minus. Okay, so like plus 1/8, मतलब 4/8 is 1/2, which means r equal to 1. So it is going to just 1 meter. Next question, 11th. क्या पता कितनी गलत हो गई. A horizontal stretched string fixed at two ends is vibrating in its fifth harmonic according to the equation something. Okay, right. Assuming pi equal to 3.14. Okay, the correct statement is, so अपने को y की as a function of, okay, fifth harmonic. Okay, cool. Wait, harmonic, right? So over to non-harmonic difference है. So fifth harmonic just means that the length is actually 5 times lambda upon 2, right? Yeah. Okay, so अपने को lambda मिल गया. Lambda is just 12/5. Okay. Horizontal stretch string fixed at two ends is vibrating in its fifth harmonic or this equation. So ये चीज, this is going to be sine of kx and this is cosine of omega t. Right. So अपने को ये देखना ना, k ये चीज है, just 2 pi upon lambda is equal to 62.8, right? Nice evidence. Keeping the number of nodes is 5. Fixed at two ends बोल रहे हो ना, तो ये तो नोड रहेगा, ये नोड रहेगा. Yeah, number of, wait, not 5. Lambda upon 2, 5 times of that, right? Okay. So ये तो एक नोड इनिशियली रहने वाला है and then फाइनली तुम्हारे और 5 है, तो इसमें 6 नोड्स आएंगे. Okay, the length of the string is 0.25 meters. What? So the string is 0.25 meters. हाँ, तो वो तो अपन कर सकते हैं. सो 2 pi upon lambda equal to this thing and lambda is just this thing. So उसको put कर दो like pi upon L of 5 हो जाएगा. So 5 pi upon L is equal to 62.8. भी क्या, L is equal to 5 pi upon 62.8, right? Which is 5 times of 3.14. और यहाँ पे नीचे क्या आ रहा है? I can see क्या हो रहा है. 0.2 times 0.2 times. सही तो किया ना मैंने? गलत तो नहीं कर दिया? 12.55 ऊपर गया. Yes, yes, that should be the thing, of course. Lambda is 12.5, उसको इधर पुट किया, so 5 pi upon L. Yeah, so 0.2 times 3.14 मतलब ये तो गया. Age is 25. L equal to 25 meter. Sorry, wait, what? Huh? That was just 1/5, of course. ये ऊपर गया. Oh god, it should be 20, not. Okay, so this is actually 5/20, यानी कि 1/4, 0.25 meters. Yes, so B is correct. ये सिंगल क्रेडिट किया है, मल्टीपल चॉइस है ना. ओके, और क्या है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ स्ट्रिंग फ्रॉम इट्स इक्विवेलेंट पोजीशन इज 0.01 समथिंग फ्रॉम इट्स इक्विवेलेंट पोजीशन. द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इसको तुम 1 कर दो, इसको 1 कर दो, दैट्स द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट व्हिच इज 0.01. यस, yeah, so C is also correct, B is correct, C is correct. The fundamental frequency is 100 hertz, omega is this thing. Speed अपने को दी क्या, फर्क नहीं पड़ता. So just yeah, like this is 2 pi times the frequency, so just this upon 2 pi, 628 upon 3.14. This thing can be thought of like 62800 upon 314, which is 200. So 200 hertz चाहिए ना इसमें. Yeah, wait, oh 2 pi, sorry. So this is actually 2 times the 3.14. Yeah, मतलब ये हाँ 100 hertz. So D is in fact correct. 12th. वेट, मल्टीपल चॉइस मुझे नहीं करने, इसमें टाइम बर्बाद होगा सिर्फ. या तो यूजुअली तो टाइम बर्बाद होता है. इंटीजर टाइप कुछ भूल जाओ अभी. नेक्स्ट इसके सिंगल करेक्ट पे जाते हैं. केमिस्ट्री. ओके, चलो. द कंपाउंड दैट डज नॉट लिबरेट CO2 on treatment with aqueous sodium bicarbonate is benzoic acid,
बेंजीसल्फोनिक एसिड, सैलिसाइक्लिक एसिड, हाँ CO2 लिबरेट नहीं कर रहा, बेंजोनिक एसिड is like just okay that treated with what bicarbonate, हाँ वो कर नहीं सकते लेकिन उसमें पॉजिटिव चार्ज देना पड़ेगा, राइट? या फिर NH नहीं, नेगेटिव चार्ज आएगा, राइट? हाँ नेगेटिव चार्ज, सो वहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है which doesn't make any sense because so हाँ हो सकता है because it's sp2, so sp2 कार्बन चलते हैं ना, salicylic acid does it liberate CO2? I mean इसमें एसिड है एंड देन इसमें OH ग्रुप है अनफॉर्चुनेटली, सो पहले तो एसिड खराब होगा उसके बाद में क्या वो OH, अच्छा नहीं O को तुमने नहीं सैलिसिलिक एसिड एस्पिरिन नहीं है, सो हाँ फिर वो निकलेगा एंड देन नेगेटिव चार्ज, हाँ हो सकता है ना, ये भी हो सकता है बेंजीसल्फोनिक एसिड, नहीं नहीं ये नहीं, ये इसमें CO2 का ट्रेस भी नहीं है, कार्ब ओ ये CO2 यहाँ से नहीं आ रहा है, ये CO2 NaCO3 से आ रहा है, हाँ फिर ये एसिड है, ये एसिड है, ये एसिड है, काम करता है कार्बोलिक एसिड फिनॉल, हाँ एसिड तो है बट ओके ये अजीब हो रहा है, सल्फोनिक एसिड, सैलिसाइक्लिक एसिड, बेंजोइक एसिड, इसमें से कौन सा अपने को एसिडिटी, ओके दिस इज वेरी गुड, आई डोंट नो, एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन, सोडियम बाइकार्बोनेट does not liberate, I don't know, मुझे इनके पीस थोड़ी नहीं याद है, ओके concentrated nitric acid upon long standing turns yellow brown due to formation of what, nitric acid HNO3, ah केमिस्ट्री पसंद नहीं है, N2O N2O4 NO2 NO, I don't know HNO3 की बात करें ना, well NO2 रिलीज तो करता है, yeah so like it can decompose as, so पहले तो H2O plus NO2 में डिकम्पोज होगा एंड देन मे बी NO2 is yellow brown, NO2 is yellow brown, I don't know, मे बी NO2 और डिकम्पोज होता है बट मुझे नहीं पता है, तो फिर I should have do this thing. Next question में then blue form its aqueous solution is absorbed on activated charcoal and distilled. What is also the correct statement is कुछ कंपाउंड भी which is absorb हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस, the absorption requires activation at 25 डिग्री सेल्सियस, oh तो ये जो है activated charcoal मतलब हाँ ठीक है, it's just chemical bonding right, it's not okay, activation at 25 degrees Celsius, yes okay fine, the absorption is accompanied by decrease in enthalpy, how would I know, how would I know this? The adsorption increases with increasing temperature. The adsorption is irreversible. I think D is correct. It is irreversible, I think. So, yeah, मतलब तुम वापस उसको कूल डाउन करोगे क्या वो रिवर्स हो जाएगा? मे बी इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं इसको, बट आई थिंक इट शुड बी रिवर्सिबल। वही अपन केमिस ऑप्शन की बात कर रहे हैं, नो इट डज नॉट इंक्रीज विद टेम्परेचर, इट एक्चुअली डिक्रीजेस, the exhaustion is accompanied by a decrease in enthalpy. This is actually exothermy. That's what you're saying. Maybe move from a aqueous solution and sort of activated charcoal. हो सकता है, I don't know about this. Okay, delta S is negative. तुम्हारा delta S की बात हो, delta S is negative. So हाँ, T delta S will be actually positive. So क्योंकि अपने को ये रिवर्स पर करना है, there's only one way. That yeah, like delta H should be नेगेटिव, अदरवाइज ये होगा बिकॉज या फिर मैं पोटेंशियल को गलत से यूज कर रहा हूँ, आई डोंट नो, बट आई थिंक क्या शायद से बी करेक्ट है, इरिवर्सिबल हो सकता है, नो अबाउट दिस वन, एग्जॉशन रिक्वायर्स सिचुएशन एट 25 डिग्री सेल्सियस, एक्टिवेशन एट, व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिवेशन, मतलब तुम हीट कर रहे हो, वही खुद ही एक्टिवेशन है ना, मे बी ए इज करेक्ट, सारे के सारे करेक्ट लग रहे हैं, ये भी अजीब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फाइड ओर्स आर कॉमन फॉर मेटल्स, ओके ओके सो केमिस्ट्री अजीब है, दैट्स व्हाट आई कैन से, is mostly in organic chemistry. I don't know anything about this thing. Standard enthalpies of formation of CO2, H2O, and glucose at 25 degrees Celsius are this is this the standard enthalpy of combustion of per gram of glucose at 25 degrees Celsius. So अपने को क्या है? Standard enthalpy of formation of CO2, H2O, and glucose 25 degrees Celsius. फिर formation दिया आपने को. This okay. The standard enthalpy of combustion per gram of glucose at 25 degrees Celsius. Okay. ग्लूकोज का फॉर्मेशन कैसे करोगे, कार्बन और
उससे, यस। ओके, तो एक्चुअली हो क्या रहा है, इट जस्ट ग्लूकोज क्या था, C6H12O6, राइट? ओके, तो इसका डिकम्पोजिशन विथ ऑक्सीजन और समथिंग, ऑक्सीजन एलिमेंट है उसको बोलते हैं। दिस जस्ट गिव्स व्हाट, सो मैं 6CO2 प्लस 6H2O, राइट? तो H2O वंस अगेन एलिमेंट है, उसको भूल जाओ। उसमें नहीं 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 नहीं, इट्स नॉट एलिमेंट, ठीक है, राइट। सो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी दिया, मतलब कि CO2 का क्या है रे, -400, ये -300, इसको मैं सिर्फ 4, 3 और 13 लूंगा। -4, -3, CO2 का क्या था, 6 टाइम्स आता है, ये -24 आ जाएगा। सो यहाँ पे एंथैल्पी है ये चीज़, और फिर यह 6H2O विच इज दैट्स लिक्विड, तो और ये लिक्विड होगा कि नहीं, आई डोंट नो, लिक्विड अज्यूम कर लो। सो -18, और फिर ये क्या चीज़ है यहाँ पे, हाँ, तो फिर ये है जस्ट वन है ना इसका मोल, लाइक -13। सो -13 से ये हो रहा है, ये कंबाइन कितना हो रहा है, नेगेटिव, मतलब चेंज कितने का हुआ इस -5 से नेगेटिव, -29, -2900 किलो जूल्स। सो इट्स पी, आई थिंक। ऑफ कोर्स CO2 H2 ज्यादा स्टेबल दिख रहे हैं मुझे तो। ओके, नेक्स्ट, consider the following complex, the correct order of complex ions according to spin only magnetic moment values in em is, so this is Fe, 3 minus, this is a VH2, okay, vanadium, chromium, magnesium, and iron is the 26th, cobalt, nickel, copper, zinc, and gallium, whatever। so अपने को vanadium मिल गया। आयन पे 8 रहते हैं ओरिजिनली, इसमें 7, इसमें 6, इसमें 5, इसमें अपने को और किसी आयन है, वेनेडियम है, बस आयन ही है। सो पहले इसमें क्या है, आयन 3+, राइट, या आयन 3+ में क्या 5 रहेंगे, तो उसको फिल कर दूँ, पूरे डी के भर गए, ओके। और एफ, तो दैट्स अ वीक लिगांड, मतलब कि 5 ही रह जाएंगे बेसिकली, दैट मेक सेंस। तो इसमें 5 है, सो ये तो काफ़ी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और क्या है, वेनेडियम में 2+ है अभी, so that just means यहाँ पे 3। H2O वीक लिगांड होता है जनरली, सो राइट, इसमें कम होगा ऑफ कोर्स, एंड देन R is this thing, okay, so FeH2O6 2+, once again H2O वीक लिगांड है, I don't think कुछ प्रॉब्लमेटिक हो सकता है इसमें, yeah, like what could go wrong, so मतलब हाँ ना, नो बिग डील। सो इसमें 2+ से मतलब कि एक्चुअली क्या क्या हो रहा है इसमें, दिस इज 6 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब हाईएस्ट क्या है Fe, देन इसमें 4 है और इसमें 3 है, राइट, यस। सो पहला वाला, सो P देन R देन Q, so P bigger than R bigger than Q, which is I think B, so 28 का B, 28 का B कहाँ पे गया, ओह शिट, ओके, 27 क्या था, 27 का अपन ने B किया था, या तो मुझे वो 27 पे कंसीडर, मैंने गलती से 12 में कर रहा। ओके, नेक्स्ट इज in the reaction, this reaction, if the time taken for 75% reaction of P is twice the time taken for 50% reaction of P, okay, the concentration of Q varies with reaction time as shown in the figure. The overall order of the reaction is, this is concentration of Q is this time, I think it will, okay, and 75, हाँ ठीक है ना, तो जो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन, 75% reaction of P is twice the time taken for 50% react, okay, the all of reaction is interesting। Q का ऐसा है, so of course it should be 0, and what is this thing, the time taken for 75% reaction of P is twice the time taken for 50% reaction, but as time goes on Q is decreasing, like मतलब कि ये zero order reaction, of course it should be 0, what is this, or 70% reaction of P is twice the time for 50% reaction, so 25% था उसमें तुम्हें वापस वही टाइम लगा, वेरी वियर्ड, आई डोंट नो। ओह अच्छा, ये सिर्फ अपन क्यू चेंज कर रहे हैं, वी आर नॉट चेंजिंग पी एक्चुअली, राइट, ओके। सो
ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, मतलब विदाउट चेंजिंग पी ये हो रहा है, राइट? ओ गॉड, सो दिस इज, ये किसके लिए है? ये सो टाइम यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है एग्जैक्टली exactly? क्या ये एक्चुअली में एक रिएक्शन के टाइम है कि तुम अलग अलग क्यू कॉन्सेंट्रेशन यूज कर रहे हो समथिंग? वेरी श्योर इट शुड बी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है अगर एक्चुअली ग्राफ ऐसा होगा। बट पी के रिस्पेक्ट में ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, राइट? ये बहुत अजीब नहीं हो रहा है? Yeah, we don't care about this because the thing is, ये जो ग्राफ है that explains everything. Yeah. पर फिर ये इसके बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं हो गया? नहीं, it should be zero, it should be zero. But या तो फिर एक कॉन्ट्रडिक्टरी है, so it doesn't make any sense. So इसका आंसर सी, 29 का सी। I don't get it कि ये दोनों साथ में कैसे काम कर सकते? 30. Ki in acetone undergoes SN2 reaction with each of PQRS. The rate of reaction varies as. Okay, इसके साथ में क्या? SN2 reaction करनी है of Ki in acetone. The rate of reaction varies in acetone. That's used for what exactly? So I minus, right? So it's used for Ki. What was it used for? I don't know. I minus, right? You're using that actually. I guess it's used for elimination. Yeah. So I minus, oh, it's SN, पहले बोला है इसमें SN2 है. Okay, this doesn't make any sense because ऐसा होना तो नहीं चाहिए. Okay, mass law action, so होगा यहाँ से I minus, okay, CH3I, ठीक है. The rates of reaction vary as, इसमें क्या हो रहा है? I minus SN2, ये सबसे easy होगा, ये थोड़ा सा hard होगा. ये तो इसको तुम पीक करो, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, then it's stabilized and what not. I guess it's easier something. Okay, और इसका क्या है? यहाँ पे रेजोनेंस इसमें हो रहा है, देन यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, दैट्स नॉट गुड बिकॉज एक पॉजिटिव आ जाने वाला है. ओके, well at least q should be less than p. तो हर जगह पे दिख रहा है मुझे p bigger than q, p bigger than q, p bigger than q. आर से अपने करना पड़ेगा, कैसे अपन इसको देखेंगे? SN2 है, राइट? इजियर चाहिए अपने को, अपन उसको वीक करेंगे तो फिर प्लस चार्ज आएगा, देन शुड इजी. या तो वो प्लस स्टेबलाइज करना पड़ेगा, राइट? दैट विल स्टेबलाइज कि अगर यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा होगा, यस. यहाँ पे रेजोनेंस तो नहीं हो रहा है एग्जैक्टली बिकॉज, सो दिस इज एक्चुअली नॉट गुड. सो एस कम होगा, आर इज मोर, सो लाइक आर, देन वेट, बट अकॉर्डिंग टू दैट क्यू में फिर हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, सो डोंट वी टेक दैट इनटू अकाउंट? समथिंग इज रॉन्ग अबाउट दिस. या should be basically static hindrance, that's according to which you will do that, right? Or something like that. And ये प्राइमरी है, राइट? देन ओके, ये दोनों इनफैक्ट फिर ओके, सो पी आर एस बिगर देन क्यू, क्यू लास्ट में आएगा, देन इनके बीच में देखते हैं. सो एस इज डेफिनेटली, या लाइक एस का रेट कम होगा, सो आई थिंक आर पी देन एस देन क्यू, मे बी. जस्ट गो विद डी, आई डोंट नो. थर्टी का आंसर डी. टाइम बर्बाद कर रहा हूँ मैं इस पे यार. 31, दी पेयर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन. वेट, ये क्या है वैसे? दिस इज मोर देन वन, मैं नहीं कर रहा. Just move on, just move on, just move on. Mathematics, let's go. A complex number alpha and 1 upon alpha lie on circles this and this happens. Okay, if z naught is equal to x plus, okay, x minus x naught squared plus y minus y naught squared to r. Okay, ठीक है ना? Fine. If z is equal to x naught plus y naught times y naught satisfies the equation, then mod of alpha is, अच्छा तो ये अल्फा वहाँ पर है, 1 upon alpha ऐसा है. So इसका एक अल्फा है some point like this, then 1 upon alpha. Oh, it's like 1 upon r actually. So distance 1 upon r होगा, right? Yeah, wait. That's not good.
बट ये 2r और r दिया है, so how does it even make sense? इनका inverses हो रहा है, but what that means, like 2r times r just equal to 1, so r is equal to 1 upon square root of 2. Okay, awesome. So alpha का क्या है? Okay, it's just 1 upon 2. Oh, sorry, alpha is so magnitude 1 upon square root of 2 आएगा, and 2 so 1 upon alpha का square root of 2 आएगा, and और क्या है ऐसे, and this is a yeah, so इनके arguments opposite है. करना क्या है सबने इनका? हाँ, करना क्या है ये तो बताओ मुझे एटलीस्ट. कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिस एंड दिस lie on the circles. ओ अच्छा, जो सेंटर है. ओके ओके ओके. ओ ये ओ शिट. ओके, सो अपन जब अल्फा और अल्फा बोल रहे हैं, अलग है काफी थोड़ा. ओके ओके, बहुत बुरा है तो. these lie on this. Okay, this is really bad. I don't think about it. There must be some way. A square का multiplication का just equal to 1. That's what you're saying, right? So just say like r and then what e power. Ah, it's not making sense anymore. So ये कैसा होगा? Z naught plus r e power I. So मैं a बोल रहा हूँ. Okay, and that times of z naught plus 2r e power I b. That's equal to 1. और देखो बोला z satisfies this equation. ठीक है, अपन अभी कर लेते हैं. So just yeah, okay. And is the thing. So multiply करो, z naught squared plus z naught times, so actually z naught r times e power I a plus 2 e power I b plus क्या है ये चीज, 2 r squared e power I a plus b is equal to 1. So we are saying or z naught satisfies this equation. So 2 magnitude of z naught squared is equal to r squared plus 2. Oh god. 1 plus r squared upon 2. ये मुझे समझ नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूँ इसके आगे. So not satisfy this equation. Oof. So minus z naught squared over there. Okay, this is getting really bad. Really bad actually. Think about it. Think about it. Nope. Just not understanding this. Magnitude of alpha is हर एक का magnitude देखना पड़ेगा. नहीं, मुझे नहीं समझ रहा है. This is not making sense. Okay, इसको skip करो because this is very weird. 4 persons independently solve a certain problem correctly with probabilities. This type of probability that the problem is solved correctly by at least one of them is. एक प्रॉब्लम है, 4 पर्सन सॉल्व कर रहे हैं करेक्टली विद दीज प्रोबेबिलिटीज. सो प्रोबेबिलिटी यानी कि कैसे क्या बोल रहे हो वैसे. अच्छा, तो इसने सॉल्व किया, प्रोबेबिलिटी क्या की करेक्ट होगा? जस्ट 1/2, राइट? सो प्रोबेबिलिटी दैट इट्स सॉल्व करेक्टली बाय एटलीस्ट वन ऑफ देम. ठीक है समझा. सो राइट, तो करेक्टली सॉल्व नहीं हुई, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जस्ट 1/2 प्लस वियर्ड एक्चुअली. सो किसी ने भी सॉल्व नहीं किया, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, राइट? सो इसे सॉल्व, राइट, जस्ट 1/2 टाइम्स 1/4 टाइम्स 3/4 टाइम्स 7/8. ऐसी प्रोबेबिलिटी किसी ने भी सही से सॉल्व नहीं किया, राइट? सो जस्ट 1 माइनस दिस थिंग, दैट्स प्रोबेबिलिटी की सब कि किसी ने एक ने तो एटलीस्ट सही से सॉल्व किया है. या सो व्हाट इज दिस थिंग? इसको कैलकुलेट करते हैं. इट्स जस्ट 21/64 टाइम्स 4 इट सीम्स. 64 टाइम्स 4 मतलब कि 256. ओके, सो दिस 1 माइनस दैट मतलब कि 235/256. Yeah, so D is the answer. सही से क्या ना मैंने? Yeah, what could go wrong? What could go wrong? No, it's correct. So it's D. 42 का D. 42 कहाँ गया मेरा? 42 का D. Next question. Okay, let f 1/2 to 1 to real, the set of all real numbers is positive, non-constant and differentiable functions such that f dash of x is less than 2 times f of x. तो f एक function है such that
ऐसा हो रहा है f dash of x is less than 2 times of f of x and f of 1 upon equal to 1, then the value of this integral lies in the equal. हाँ, f dash of x is less than 2 times of f of x. ये कैसे यूज करूँगा मैं? So wait, okay, I get it. So f of x is bigger than half f dash of x, right? Yeah. Then this integral is bigger than what? It's bigger than half integration from 1 upon 2 to 1 of f dash of x t. मतलब कि क्या? Just f of x का change. So like half f of 1 minus f of 1 upon 2. Yeah. Okay, it's bigger than this thing, right? Uh, and f dash is constantly. Wait, what? 1 upon 2 say. Okay. Set of real numbers. Positive non-constant and differentiable function. So it could also be negative, right? Who cares? Yeah, f dash को negative कर दो and then right, so it's bigger than this thing at least. And all we care about is that f of 1 is bigger than 0. So this is just bigger than negative half of f of 1 upon 2. That's the thing. Value of this integral, right? And that's just 1. So it's bigger than negative 1 upon 2 at least. Okay. Well, no, it should be bigger than 0 automatically because वैसे तो काम नहीं करेगा. So the value of this, okay, lies in what interval? It's not helping much. Hmm. It's in what? What is all of this? E. Okay, E कैसे आ गया इसमें? So let's try to do it in a different way. So so f dash of x minus 2 f of x लिया आपने को. इसको e power x multiply करते हैं. E power 2x. So e power 2x then f dash minus 2 e power 2x times f. Right? This thing is less than 0. The d upon dx of what? E power 2x times f is less than 0. What that means is e power 2x times f, ये function is always decreasing, right? Okay. So initially, okay, e power 1 upon what? Square root of e था initially, और उसके बाद में कुछ तो भी इसका positive version हो गया. We don't care वो क्या है, but yeah, that's what happened, right? Oh god. इसको g बोल दो. जैसे g equal to e power 2x times f. ये जो रहेगा just integration of, weird actually. It's always decreasing, I get it. What about the slope of, we don't know about that. Oof. Okay, I want to think about it. कोई और तरीका है. So initially ये square root of e था, right? Then finally कुछ ना कुछ इसका हो जाएगा. We don't care about it. Zero भी हो गया क्या फर्क पड़ता है? Come on, think. G is equal to e power 2x times f. So this will just be right integration of g e power negative 2x and then dx, right? Yeah, from 1 upon 2 to 2. ठीक है ना? So how do I do that in that case? Oh, it's not helping. Probably with 2x. Some way to do it. Still don't know. So initially क्या था? F of x क्या था? One of it's like okay. So f dash is less than 2, right? Okay. So f dash is just less than 2. कितना भी नेगेटिव कर दो ना उसको क्या फर्क पड़ रहा है? Just positive and everything, yes. It's a decreasing function, sure. What about something like a constant? So suppose it's decreasing by very little, right? तो इसका area maximum रहेगा. Yeah. Right. That will give us maximum area and then minimum area कब होएगा? जब it's like decreasing very fast. ठीक है, maximum area अपन ढूंढ सकते हैं. So that will happen when this is decreasing very little. But e power 2x times f is kind of a constant, is approximately just sort of e all the time, right? So f is approximately less than or approximately sort of e times e power negative 2x. So अपने को इसका integration करना है. So integration of this thing is actually less than what? It's less than integration of 1 upon 2 to 1 of square root of e power negative 2x dx. Yeah. तो उसका अपन कर सकते हैं just square root of e और फिर यहाँ पे क्या जाएगा
इसका integration just keep on negative 2x upon negative 2 going from this to this to so ऐसे बनेगा just 1 upon 2 to 1 so sort of e upon 2 then यहाँ पे क्या जाएगा 1 upon e power 2 minus 1 upon e power 1 right this okay negative था इसमें sorry so negative इसका मतलब कि क्या square root of e upon 2 times 1 upon e minus 1 upon e squared, which is like what? Uh, 1 upon 2 square root of e times 1 minus 1 upon e minus 1 upon e. So e minus 1 upon 2 e power 3 upon 2 से छोटा है at least, that's we know. That's what we know. Okay. Still not helping because इसमें अलग अलग वैल्यूज दी है. So इसमें 2e minus 1 दिया, e minus 1 upon 2 e minus 1. So ये किस चीज से बड़ा है? Okay, समझ लगा. It won't help like this. क्या किया इन लोगों ने exactly इसमें? I don't know. So the time भी नहीं कि मैं इसको सही से कर पाऊँ. Okay, number of points in this thing for which this equal to 0 is okay. So minus x sine x minus cosine x equal to 0 is okay. Point in negative to infinity. This happens. हाँ इसका डेरिवेटिव निकालो ना. Let's see what happens. Wait, okay. इसमें क्या क्या है? Answer 0 2 4 6. Oh God. Not good. Not good. So डेरिवेटिव कैसा रहेगा? Just 2x minus sine. Yeah. Okay. Then you just have minus x cosine. यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा तो ये कैंसिल हो गया just this thing so x times of 2 minus cosine है 2 minus cosine is always positive so it's basically dependent on x so x bigger than 0 पे ये increasing function add x equal to 0 कितना है add x equal to 0 इसकी वैल्यू है oh it's just negative 1 ठीक है तो negative 1 से फिर increase हो रहा है and then when x is less than 0 ये decrease हो रहा होगा wow okay so ये x में ऐसा होगा मतलब कि दो इसके पॉइंट्स जहाँ पे ये एक्सेस को इंटरसेक्ट करेगा दैट्स इट which means C is the answer 44 का C next 45th 45th is the area enclosed by the curves this curve and that curve over the interval this okay is 0 to pi upon 2 y जो भी mod of cosine x minus mod of okay sin x हाँ x belongs to this term right so सही से लिखो y equal to square root of 2 sine of x plus pi upon 4 and this is like दूसरा जो है just y is equal to square root of 2 mod of cosine of x plus pi upon 4 right okay something like that yeah so x plus pi upon so x goes to 0 to pi upon 2 x plus pi upon 4 goes from what to what just pi upon 4 to 3 pi upon 4 right so let's just say theta or x वापस x use कर रहा हूँ x belongs to pi upon 4 to 3 pi upon 4 and it's this thing y equal to this and y equal to that so interesting अपने उसे area चाहिए right so square root of 2 sine of x and then square root of 2 cosine of x so cosine of x think about it will become negative after a certain point okay this is not going good so still try करते हैं it's 5.4 over here and then so 5.4 से तो 5.2 तक cosine x positive है and everything and it's bigger than sin x as well wait no it's less than sin x wait yeah okay yeah so square root of 2 times sin x minus cosine x that would be the thing actually मैं ये क्यों कर रहा हूँ इतना पूरा डायरेक्टली करो ना इसको so right it's like 0 to pi upon 4 की बात करें 0 to pi upon 4 क्या है just y is equal to s plus c पहला है and then y equal to 0 to pi upon 4 में sin छोटा होने वाला है that's just c minus s और फिर so it's 0 to pi upon 4 और फिर इसके अंदर का जो कर्व है just difference of these two yes because ये तो already बड़ा हो जाएगा which just means difference is what 2 sines which is integration of 2 sine from 0 to pi upon 4 then plus pi upon 4 to pi upon 2 रहेगा फिर वो and then इसके बाद में क्या होगा s plus c यहाँ पे और c s minus t से होगा डिफरेंस वापस और mod of that at least so 2c right integration of 2c dx from here to here that makes sense okay let's do it so अपन उल्टा भी ऐसा है let's put pi upon 2 minus x in this thing which would means like integration of pi upon 4 to pi upon 2 of sine basically yeah
ऐसे ही रहने दो इसको. Just integrate these things like 2 cosine 0 to pi upon 4, which is 1 upon square root of 2 minus 1, and then यहाँ पे कैसे plus 2, so negative आ जाएगा plus. और यहाँ पे negative चाहिए, यहाँ पे positive चाहिए, plus 2 sine. So sine from here to here, which is 1 minus 1 upon square root of 2. So again, totally just get 1 upon square root of 2, and 4 times of that, right? Okay, so that, which is like what? 2 square root of 2 times square root of 2 minus 1. This will be this thing. B. Next question. 46. A curve passes through the point this thing. Let the slope of the curve at each point xy be y upon x plus secant of y upon x blah blah blah, and the equation of the curve is. अच्छा, so slope अपने को दिया हुआ है, बढ़िया. So just dy upon dx equal to this thing. Assume y equal to kx कर दो. So k is a function of, I just say y equal to fx, where f is a function of x. So what you will have is f plus secant of f is equal to d upon dx of y, it's like f times of x. So it's just f dash times x plus f, right? Which means f dash times x is equal to secant of f. So f dash cosine of f is equal to 1 upon x, right? Like the above. Okay, so this means df upon x. So यहाँ पे dx again, this means integration. So sine of f is equal to natural log of x plus some kind of constant, right? Mod वगैरह आएगा इसमें. Yeah, so that's the curve, and it passes through what? It passes through the point 1 comma. Okay, so it's 1 put to just 0 over there, and then इसमें sine of pi upon 6 which is 1 upon 2. So c equal to 1 upon 2 basically, right? So the equation of curve is this thing, sine of f. Okay, इसमें f actually. Yeah, okay, right. So sine of y upon x is equal to natural log of x plus 1 upon 2. Yeah, which is just a. Next question. 47. 47 is the value of this sum, n equal to 1 to 23 of cot inverse of 1 plus summation from n equal to 1 to k, just 2k, right? Yeah, into 2, but just 2 times of k, tk, so just 1 plus n times n plus 1. Yeah, so just cot inverse of this thing, right? Tan inverse of 1 upon so much so this thing. So this is n plus 1 minus n, tan inverse of n plus 1 minus tan inverse of n. That's what this thing is. So summation from n equal to 1 to 23. So let's just start n equal to 1. N plus 1, like tan inverse of 2 आएगा initially, minus tan inverse of 1, चलते जाओ till tan inverse of what? यहाँ पे tan inverse of अगला क्या आएगा actually 3 आएगा ना, minus tan inverse of 2. Okay, cool. और फिर चलते जाओ, then eventually get tan inverse of 23 plus 1, I guess, because yeah, so 24. That's tan inverse of what? 23. So कुछ cancel हो जाएगा यहाँ पे. Yes, tan inverse of 24 minus tan inverse of 1, right? So that's what, like tan inverse of 24 minus 1, which is just 23 upon 1 plus 24 times 1, just 1 plus 25, right? So yeah, the cot inverse of 25 upon 23, so cot of just 25 upon 23, which is B. Next question. 48. Oops. For A, we can see the distance between this point and the point of intersection of the lines. This is less than sort of, then no lines here. Point of intersection of the lines is distance between 1 comma 1. Acha, is less than sort of 2. Then seriously though, इनके point of intersection के बारे में बोल रहे हैं. हाँ, distance less than sort of 2 है, just 1 comma 1 से बात कर रहे हैं. So जो भी point होगा, that actually has this thing x. Wait. I think I know अपन क्या कर रहे हैं. So some point on this, यहाँ पे जो distance है actually less than something. So जो point है, okay, that's inside of a circle, right? Yeah, that's inside of a circle. और फिर ये एक inside point से pass कर रहे हैं, that can only mean one thing कि and का जो slope है actually inverse of each other. That's weird. कुछ भी सकता है ना, right? Yeah. But the thing is कि इसका जो distance रहेगा from this thing, yeah, okay, that is in fact less than the radius. So just उसमें वो put कर दो, just ax plus
sorry, a plus b plus c upon square root of a square plus b square, that at least has to be less than 2 sort of 2, right? So सारे पॉजिटिव है, that's why this is going to happen. और इसमें नेगेटिव यूज कर रहे हैं somehow. Okay. Slope इसमें reciprocals है, right? So m1 times m2 equal to 1. What does it tell us? कुछ बोल नहीं, I don't know. What does it even tell us actually? God, what is this thing? यहाँ पे ऐसा है. Clearly a plus c is bigger, okay, less than some stuff like this, okay. So upon sort of a sort of b sort of आया ही नहीं. Some other thing that you can do about it. Let's नहीं do it. Square कर सकते हैं अपन इसको, but that's just not good because 8 a square plus b square आ गए थे, and then oof, this is just awful. तो कोई और तरीके से कुछ करना पड़ेगा. So then what? Okay, yes, then this particular thing sort of it is a point here which satisfies this point of intersection of these guys, right? That must satisfy some properties. First of all, a minus b times x and then plus b minus a times y is equal to 0, which means like x equal to y basically, if they are not a and b are not equal. और क्या a plus b, अच्छा x equal to y है ना, तो उसमें put just a plus b times x plus c equal to 0, so this means x is equal to negative c upon a plus b. So y or x दोनों को just c upon a plus b and then negative actually, so negative c upon a plus b and then negative c upon a plus b. That is the thing. Yeah. Right. तो करना क्या है इसका? Then okay, अपने को ये क्वेश्चन ढूंढना है. So इसका जो डिस्टेंस है that's less than 2 sort of 2, right? From 1, 1. Cool. Of course ये उसी इस पे है, so I see क्या हो रहा है. Right, it's doable. Cool. वो square root बाहर निकल जाएगा, just this. Yeah. साइड लेंथ है वो 2 है. और c और a b सारे पॉजिटिव, राइट? बट दैट मींस लाइक 1 plus c upon a plus b, it's less than 2. Okay. What? Wait, ये कैसे हो गया? Wait, something's not correct about this thing. We got x equal to y, sure. और क्या मिला आपने को फिर? नेगेटिव c upon a, राइट? इट शुड नेगेटिव c upon a plus b. और फिर ये काम करना चाहिए था. It's not working. We'll see क्या होता है. So just a plus b plus c less than 2a plus, अच्छा नहीं काम कर जाएगा, which will less than 1 directly, but a plus b minus c is less than, sorry, it's bigger than 0, right? Which means a. So 48. Next question, 49. Perpendiculars are drawn from this point on this line to the plane. Okay. Points on this line to the plane. The feet of perpendiculars lie on the line. अच्छा तो ठीक है ना, तो इसकी तुम्हें वाली लाइन लिखनी है. नो बिग डील, इट्स डूएबल आई थिंक. सो प्रोजेक्शन देखना, राइट? या सो काइंड ऑफ वियर्ड दो. ठीक है, जो ये क्या लाइन है एक्चुअली? नेगेटिव 2 कॉमा नेगेटिव 1 कॉमा 0 प्लस r टाइम्स 2 कॉमा नेगेटिव 1 कॉमा 3, दैट्स आवर लाइन. और ये जो है इसका वेक्टर क्या है? 1 कॉमा 1. अच्छा, ये x प्लस y प्लस z इक्वल टू 3, तो कौन सा पॉइंट इस पे लाई करता है? पुट करता हूँ उसमें. So ये वेक्टर टाइम्स 1 कॉमा 3, so that is negative 3 plus r times उसके डॉट प्रोडक्ट मतलब कितना? 2 minus 1 plus 3, वो तो 0 हो गया. Wait, what? Something's not right about this. नहीं 0, okay, sorry. It will be 4, not 0. 3. That's equal to what? 3. मतलब क्या? यहाँ पे 6 है, just r is equal to what? otherwise तो 3 upon 2. हाँ, so at r equal to 3 upon 2. Right, okay. So the point रहेगा, we can figure that out, which is this thing, negative 2. इसको इसमें डाल ही दो ना. What's the big deal? Right. This is not good actually, because dot product here is negative 3 plus r times is the dot product here to just 2 minus 1 plus 4, और फिर यहाँ पे आ जाएगा equal to 3, मतलब 3 क्या 6 and then just 3 upon 2, r equal to 3 upon 2 करना ही पड़ेगा. Negative 2 plus 3 upon 2 times 6 is just what? 1 comma negative 1 plus, sorry, negative 3 upon 2, right?
which is negative 5/2 comma, so 3/2 क्या आ जाएगा ये 9/2. That's our point. Okay, ये एक पॉइंट जो इसमें लाई करता है. एंड अपोज वेक्टर, सो ये वेक्टर है, मेरे को इसका क्या चाहिए, वी वांट द component along that, right? So want this vector 2 comma negative 1 comma 3, इसका डॉट लेना पड़ेगा. डॉट विथ कौन सा अपना वेक्टर था, वेट नहीं नहीं नहीं, अपने को प्लेन के along चाहिए, राइट? we actually have to take the perpendicular vector distance. Yeah, okay, so we have perpendicular. So the magnet निकाल सकते हैं, but actually figuring it out is kind of hard, right? So the way to do that is of course, नहीं यार, ये बहुत लंबा होने वाला है. Shit. पहले अपन उसका पैरेलल वेक्टर निकाल लेते हैं एक्चुअली, राइट? सो दिस थिंग 2 negative 1 3 dot, ये चीज 1 1 1, that's the magnitude upon sort of 3 because हाँ ये चीज, and then this times इसका यूनिट वेक्टर, so इसका 3 आ जाएगा, and then once again is this thing, so 1 1 1, that's the answer, which means इसका क्या होगा, अपन ऑलरेडी ये डॉट निकाल चुके हैं, it's just 4, so 4/3 times ये चीज, मतलब e, so this is that vector, and now you want this vector minus that vector, which is कहाँ पे मर गया ये, 2 negative 1 3 minus this thing, so 2 minus 4/3, then यहाँ पे क्या है, negative 1 minus 4/3 and 3 minus 4/3. सिंप्लीफाई करते हैं ना, this like this thing, 6 minus 4 comma negative 3 negative 4 comma 9 minus 4, okay, so what, 2 negative 7 and 5, so that's that vector, so 2 negative 7 and 5 should be there, so इसमें तो एक ही है, मतलब कि D is the answer, right? Okay, so D is the answer. Next question 49 study. Yeah, so ये एक है, अब इसमें ये चीज को ऐड कर देते हैं, some combination of that, so अपने को 0 करना है, राइट? सो जस्ट negative 1 terms of this thing, मतलब 7/2 इसमें ऐड किया, just 1, yeah, it actually works out. Cool. Next question 50. 50 is let PR vector be equal to this thing and SQ vector. This thing determine the diagonals of the parallelogram PQRS and PT vector equal to this thing, another vector, then the volume of the parallelepiped determine the by the vectors PT vector. Okay, तो एक में वेक्टर दिया है, फाइन, राइट? ओके ओके, वेट, PR वेक्टर की बीच में PT वेक्टर, PQ वेक्टर, PS वेक्टर, राइट? जो SQ दिया, वेट, PR वेक्टर तुम यूज भी नहीं कर रहे, सो दिस P है, फिर यहाँ पे R है, और क्या SQ डिपेंड डायगोनल्स ऑफ द एलिमेंट. ओके ओके, समझा समझा समझा. So this is P, this thing is R, then you have this stuff, so Q and S, right? So to figure out these things, what we have to do is like this vector, and God, figure out diagonal somehow. Shit. So A vector plus B vector is equal to PR vector, assume कर लो, whatever, and A vector minus B vector assume कर लेते हैं, QS vector, so right, इनका addition upon to average निकालो, हो सब, right? Yeah, no big deal, just God, the dot product though. Not liking this thing. So तो actually करना क्या है, like this, we want to do this thing. So PR vector plus QS vector, इसमें अभी के लिए XY vector, XYZ बोल रहा हूँ, so just X vector plus Y vector upon 2 and then X vector minus Y vector upon 2 comma Z vector, क्योंकि वो तो दिया है अपने को, right? So PT vector, yes. Okay, so इसका अपने को बॉक्स निकालना है, which can be done in that way, sure. It's like Z vector dot इनका क्रॉस प्रोडक्ट, so हाँ, x क्रॉस x तो 0 हो जाएगा, just negative x क्रॉस y, फिर और यहाँ पे 4 आएगा नीचे, and then this is plus y क्रॉस x, because वो तो 0 ना, just -2, वो नेगेटिव का कारण भूल गया, just this thing, x cross y upon 2 and then dot with that, so like this thing, xyz box upon 2, right? Yeah, that explains it, I guess. So half of box, और वो box क्या रहेगा इसे, it's 3
1 minus 2, then you have 1 minus 3 and negative 4, then इसका है just 1 2 और क्या है ये 3. Let's do it. Okay, so directly calculate करते हैं. So it's 1 upon 2 and then it's actually very weird. Yeah, it's very weird. Anyway, so इस जगह 3 times ये कितना होता है? Just negative 9, negative is positive 8, then negative 1 times 3 plus 4 and then plus 1 times negative 4 negative 6, right? Yeah, that looks cool. That's the thing. Yeah, 1 upon 2 and then 3 times of negative 1 minus 1 times minus 7 basically, and then you have to take a minus 10, so you got negative 17 और फिर यहाँ पे negative 3 आ रहा है. Mod लेना है सही, just 20.2 मतलब कि 10, so 10 50 का आंसर C. Next question 51. That s be equal to this sum, then Sn can take the value. So it's the sum from k equal to 1 to 4n of negative 1 power k plus 1 upon 2. Okay. Well, this is it depends on k basically. So when k is, oh god, this would be really bad actually. So we add करते जा रहे हैं. So k equal to 1, तब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? Just you know it's a sum till k, right? Don't think about it. So k even होगा, then this thing just even upon 2 times odd. Yeah, it depends actually. K should be like multiple of 4 or what. Oof. So if this is the thing, then Sn can take the value of what? It's leading on top of this squares, right? Okay. Wait, so इसका modulo 4 कुछ भी था ना, right? So modulo 4 a square is either 0 or it's 1, और यहाँ पे negative आ रहा है. It's not good. 1 till 4n you are saying. Oh, that explains a lot actually. Okay, 4, right? Let's break it up into different things. अपन पहले put करेंगे k is equal to 1. So अगर से 4 times of r, तब क्या हो रहा है? k is equal to 4r plus 1, k equal to 4. हाँ ठीक, वैसे करते जाओ. So पहले 4 टर्म उसको रिपीट करना है मेरे को with increasing r. जब k 4r है, then this will become what? So it's like 4r times 4r plus 1 upon 2. So it's like 2r times something. So just 1 अच्छा करते हैं. क्या 4r का square and अगला आएगा 4r plus 1. So 4r plus 2 upon 2r plus 1. So odd है और फिर यहाँ पे odd है. So just negative. So negative, yeah. Negative 4r plus 1 squared. Then next 4r plus 2 आएगा. So 4r plus 2 upon 2 is just 2r plus 1. फिर यहाँ पे आएगा 4r plus 3. So दोनों odd है. Negative. फिर यहाँ पे negative आएगा. Negative 4r plus 2 का square. Finally 4r plus 3. So 4r plus 3 में 4r plus 4 आएगा यहाँ पे, which means it's or even, right? So plus 4r plus 3 का square. Now let's do it. So this is what? Negative, यहाँ पे 1 आ जाएगा, just 8r plus 1, और फिर यहाँ पे आएगा positive 8r plus 5. So 4, तो अपन summation of 4 कर रहे हैं from r is equal to 0, तो start अपने 1 से करने वाले हैं, right? So k equal to 0 से भी start करो, क्या फर्क पड़ रहा है? So start अपन 0 से करेंगे all the way till r equal to, फाइनली अपने को 4n चाहिए रहेगा. So लास्ट चाहिए अपने को, अच्छा 4n minus 1 तक जाए क्या? Yeah, that will be actually nice. So we can actually go to 4n plus 4n minus 1. तो वो कब आएगा? It's like we'll n minus 1. So जब n minus 1 पुट करेंगे इस मामले में, so 4 times of n minus 1 plus 3 should be 4n minus 1, और फिर लास्ट में जो लास्ट की 4n वाली टर्म आएगी, which is of course just even आएगा ना, just 4n का square. Right, that's the thing. So एक last जो term रहेगी, that's the problematic thing because उसमें yeah okay, interesting. So 0 1 2 3 4, sorry 1 2 3, right? पहले 4 terms, फिर चलते जाओ, right? Yeah, so 0 include कर सकते हैं, that's why I'm doing it.
कूल, फिर ये काम कर जाएगा, विच मीन्स दिस इज एक्चुअली जस्ट इक्वल टू व्हाट, 4n का स्क्वायर प्लस ये सम कितना कितना n, लाइक 4n प्लस 4n स्क्वायर, okay, which is like 4n times 4n plus 1. Cool. Right, so Sn can take the values of what? 105. But the फिर 4 का multiples होने वाला है, right? So it's multiple of 4. This is a multiple of 4. Yes, this is a multiple of 4. Yes, this is a multiple of 4. Yes, yes, सारे multiple of 4 है. फिर 4 से divide कर दो and it should be like, or it's not good actually. So if we form, ah, okay, so 4 से divide करने पे it's like n times of 4n plus. यार ये बहुत अजीब हो रहा है. Should we just start putting in values? So we start by n equal to 10, like it should be 40 times 41, which is 1600 plus 40, so like 1640. बहुत बड़ा हो गया, right? So let's put n equal to 5, 5 which is 20 times 21, which is like 400 plus 24, बहुत छोटा हो गया. Let's put 7, so 7 times this thing is what? 28. 28 times 29, right? Okay. 29 and 28. 30 minus 2, 30 minus 1, so like 900 minus 3 times 30 and it minus 90 and plus 2, so 8 1 something जा रहे अपन पास में, just put in 8, शायद से वो काम कर जाएगा. Then you put 8 is just 32 times 30, what, 3, so 900 plus 5 times of 30, right? Yeah, so 5 times of 30 is 150, okay, plus 6, मतलब कि 1056. It can be this, which is A. Next question. So 51 का A. Next 52. और टाइम नहीं जा रहा है मेरा, जा तो रहा है. For 3 by 3 matrix M and N of the following statements is or are not correct. Wait, ये क्या है? Multiple choice नहीं आ गया ना? Oh, this is actually multiple choice. हाँ, interesting. Wait, फिर अपने को shit. अपन ने n equal to, oh god, अपन ने n equal to 7 put किया, we also have to put, so 8 put किया, 9 put करना पड़ेगा. So like क्या हो जाएगा? 36 times 37, right? Which is 40 minus 4 times 40 minus 3. चलो करो इसको. 1600 minus 7 times 40, which is minus 280 plus 12. This will be what? 1 4 of it 1320 plus, so 1332, which is D. तो D भी काम करेगा इस टाइम. So इसका D है. 51 का A and D. चलो फिर मल्टीपल, oh god, अपने मल्टीपल चॉइस करने पड़ेगा सीरियसली. Oh shit, जी नहीं देखना है. वैसे 8, okay, whatever. So if a single correct सारे हो गए, we'll have to go for something else. Integer type, of course. Okay, start with maths itself. So कहाँ पर है अपना? oh, ये तो पहला मल्टीपल चॉइस था. Integer type, right? Okay, 58 कर दे. Taking of 3 consecutive terms of 1 plus x times n plus 5 are in the ratio 5 to 10 is to 14, and n, what is this thing? N is just n is, right? Yeah. 3 consecutive terms of this expansion. Hardly, that's no big deal. So what we're saying is like nc n plus 5 actually. Can't put n plus 5, but just put it as capital N, and capital NC r minus 1 put कर देते हैं, just capital NC r and then capital NC r plus 1. These are in this ratio, right? Okay. The n is not like this exactly. So divide करते हैं NCR से greater ratio. So NCR minus 1 upon NCR मतलब क्या? यहाँ पे आएगा n माइनस छोटा वाला r, which is just r minus 1, so n minus r plus 1, और ऊपर आएगा बड़ा वाला r, which is just r is to 1 is to, यहाँ पे आएगा r, sorry, it's just this, so like n minus r upon r plus 1. Yeah, that looks correct. Okay, so अपने को ratio मिल गया, and this is what, it's in this ratio 5 to 10 is to 14. So what it means is like r upon n minus r plus 1 is equal to 1 upon 2, and n minus r upon r plus 1 is equal to 1.4, or like 41, 7 upon
5, right? Yeah, जब n और r integers हैं. So that just means what? 2r is equal to n minus r plus 1 पहले तो, which means n is equal to 3r minus 1, where r is in fact integer. And और यहाँ से क्या मिला अपने को? 5n minus 5r is equal to 7r plus 7. क्योंकि 5n is equal to 14, shit, 9, 12r plus 7. Okay. But then if इसको इसमें put कर दो, so 15r minus 5 is equal to 12r plus 7, which means 3r is equal to 12, यानी r equal to 4. So n must be what? 12 minus 1, right? Which is 11. So that's equal to actually n plus 5, and n is equal to 6, it seems, right? We should check this out. So 11c क्या है? पहले 3, then 11c 4 and 11c 5. ये आएगा 11 times 10 times 9 और बहुत लंबा नहीं है वाला, whatever. 3 times 2 times 1 that is to 11 times 10 times 9 times 8 times nothing upon 4 times 3 times 2 is to this thing. So अच्छा 3 times 2 तो काट ही सकते हैं, right? और 11 times 10 times 9 भी काट सकते हैं. So just this thing 1 is to 8 upon 4 is to 8 times 7 upon 5 times 4. That's the ratio. If 1 is to 2 is to 14 upon 5. 5 multiplied by 5. Yeah, so it works out. N equal to 6 is the answer. Right. Yeah, that should be the thing. So N kya hai 6? 56 plus 6. Next 57. 57 is a pack contains n cards numbered from 1 to n. Two consecutive number cards are removed from the pack, and the sum of the numbers on the remaining cards is 1, 2 to 4. The smaller of the numbers on the removed card is k, then k minus 24. So k minus 20. Pack contains n cards number 1 to n. Two consecutive number cards are removed from the pack, and the sum of the numbers on the remaining card is 1, 2 to 4. 1 to n है, remove किया. हाँ ठीक है ना, ओके. Yeah. So fine. The smaller of the number. Okay. Consecutive number. Okay, that you should have said that. ये k और k plus 1 हो जाएगा, right? Okay. So right. In fact, एक काम डायरेक्टली करते हैं. Wait. Don't rush. Because most likely काम नहीं करेगी instruction. Plus 20s. I think we should do the proper way, but whatever. So n times n plus 1 upon 2 minus k तो गया और फिर क्या k plus 1 भी गया ना, smaller card k. So minus 2k minus 1 is equal to what? 1, 2 to 4 or something. So n times n plus 1 minus 4k, I just say equal to 4k plus 1, 2 to 5 times 2, which is 24 and then 50. So 2450, right? So which is n times n plus 1 is equal to 2450 plus 4k basically. So basically इसको अपने को divide करना into what? वो co-prime numbers. हाँ, interesting. So अपने को करना क्या है? k minus 20 is just you have to guess or what? I'll think about it. काफी बड़ा नंबर है. So like n square की बात करते हैं. So approximately n square. So इसका square root निकाल लेते हैं, right? And nk is of course like less than or equal to n. What that means is like n times n plus 1 minus 2450 is actually less than or equal to n. So sorry, less than or equal to n minus 1 in fact. Doesn't really matter because actually hey no less than n below strictly. What that means like n square is less than 2450. So n is less than square root of that. Square root of 2450, huh? 2500 approximate. तो फिर n is less than 50 basically. So between 50 and something. So n is less than 50 at least. Okay. अब क्या start करूँ? Yeah. अच्छा और इससे बड़ा तो होगा ही. So n is less than 50 and so n times n plus 1 is this. ठीक है, so n you can put n equal to, let's put 45. So 45 times 46 हो जाएगा, फिर 45. थोड़ा सा गंदा नंबर है. 40 put कर दो ना, 40. 40 times 41, which is like 1600 plus 40, like 6.650. बहुत छोटा हो गया. So put something like 45 करना ही पड़ेगा. 45 times 46, which is 2230 times 9. Yeah.
is like 1827070, so 45 है, still छोटा है. 46 47 put करते थे, so 47 times 48, so 6 5 carried on 32 30 704 7 8 2 carried on 16 16 and 1 8, so यहाँ पे 6 5 1 carried on 4 और फिर यहाँ पे 2 1 carried on 2 2 5 6. So 2 2 5 6 is still small, which means 7 भी काम नहीं करेगा. Keep on going. 8, right? So like क्या हो जाएगा? Sorry, 48, right? So 48 times 49, which is like 50 minus 2 times 50 minus 1, so 2500 minus 3 times of 50 minus 150 basically, plus what? Plus 2. मतलब ये हो जाएगा 2 4, okay 2 3 actually 2 3 5 2. हाँ, still small. Next, so 48 49 put करो, so like 2 3 5 है ना यहाँ पे, 49 put कर देते हैं. So yeah, we just like 49 times 50, मतलब 50. So 2500 minus 50, which is 2450 exactly, right? So suppose k equal to 0 तो अपन कर नहीं सकते. Right, it does seem like that is the case. So 50 to 51 अपने का था, right? Yeah, so like n square is less than this thing, मतलब कि n is less than sort of this thing, but ये तो काम नहीं करेगा यार. Oh, it's like, oh, sorry, it's less than 4n चाहिए अपने को यहाँ पे. Right, so less than or equal, हाँ अपने equation बदल दिया, n square plus n minus 2450 is less than or equal to 4n. So at least we know कि 50 से बड़ा, okay sorry 49 से बड़ा चाहिए, right? So n is bigger than or equal to 50 at least, right? Yeah, because 49 is just won't work, so it has to be bigger than or equal to 50. और इससे अपने को एक और कंडीशन मिल जाएगी, which is that n square plus n is like 49 minus 4 आएगा ना, because n is maximum क्या हो सकता है, n minus 1. Yeah, so n squared minus 3n is less than or equal to what? 2446. n times n minus 3 is less than or equal to 446. So n से बड़ा है, start putting in values. Let's just put n equal to 51, right? 52 also put together, because like 50 times 50 minus 3, is that working? So for like what, 50? Yeah, क्या हो जाएगा, n square minus 3 times n, right? So 50 is just 2500, and then this is minus 150. So this is 2600. So shit, 2 4, and then it's like 2 3, so 2350 होगा. It is of course less than that. So 51 put करो. So 51 times 50 50 what, like 40 odd. 50 minus 2 करो ना directly. What is this thing? 2500 minus, once again it's just plus 1 minus 2, so minus 50 and then minus 2. So that will be what? 2452, which is slightly bigger than that. So ये काम नहीं करेगा, which means oh, so n equal to 50 would be the thing in fact, right? I think that is the thing. So n equal to 50, इसका मतलब क्या हुआ? We'll figure out k by doing this thing. So इसमें put करो, just 50 times 51, just what? 50 times 51 is 2550, okay, is equal to 2450 plus 4k. मतलब उधर गया just 100, मतलब k equal to 25. So you got k basically, मतलब कि ये 5 होगा. 57 का आंसर 5. Next 58 करते हैं. Of the three if dependent events E1, E2, E3, the probability that E1 occurs is alpha, only E2 occurs is beta, and only E3 occurs is gamma. There's a probability B that none of the events occur satisfy this equation. All the probabilities are assumed to be lying in the interval 0, 1. Then probability of occurrence of E1 upon probability of occurrence of E3 is. अच्छा E1 की अल्फा है, ठीक है. So like सिर्फ वो occur करते, then that's this thing, and okay. Independent events. Oh,
independent events. So inside probability और outside probability सेम होने वाली है. Wait, what? अच्छा समझा. 3 slots. Okay, right. Only E2 occurs as beta and only 3 occurs as gamma. There's a probability that none of the events occur. Let's say कि probability इनकी P1, P2, P3 है, then only E1 occurring क्या probability होगी? 1 minus P1, sorry, P1 times 1 minus P2 times 1 minus P3, right? Yeah. Beta is similarly तुम्हें सारे मिल जाएंगे. And probability that none of the events occur is P. So P is what? None of the events occur मतलब कि 1 minus P1. हाँ ठीक है. So 1 minus P1 plus P2 plus P3. Yeah. ये करना क्या है वैसे? So वो इस इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है. Okay, interesting. God, this won't work. This won't work. It's like कुछ तो चीज़ें होगी जो अपन कर सकते हैं इसमें. We really have to put in the values. So alpha minus 2 beta P is equal to alpha beta and then this happens. Okay. Think. Here's a better idea. Probability नहीं हो वो अपन P1 बोलेंगे. So alpha will be what? 1 minus P1 times P2 P3. Similarly beta will be हाँ वो कर दूंगा. P is P1 P2 P3. Yeah. Okay, awesome. So हमें करना क्या है? So alpha minus 2 beta मतलब P3 तो कॉमन निकालो. So like P3 तो यहाँ पे क्या आएगा? अल्फा में 1 minus P1 times P2 है. Minus 2 मतलब बीटा क्या है? 1 minus P2 times P1. Okay, times P, which is just P1, P2, P3 is equal to alpha beta, which is like what? So alpha beta में P3 square आ जाएगा. Just minus P1 times P2 times 1 minus P2 times P1, right? P1 P2 कट गए. P3 square भी गया. So this equation. Okay, very weird. So what does this should tell us? Just 1 minus P1 squared. That's also high G. We're seeing something like this. So minus 2P1 shit is square for now. So P2 minus P1 P2 minus 2P1 plus 2P1 P2 is equal to 1 minus P1 minus P2 plus P1 P2 from the first equation. तो क्या हो रहा है? कुछ मर नहीं रहा है इसमें. यहाँ पे हाँ ये मर रहा है ना. बढ़िया. And it just becomes 1 is equal to minus P1 plus 2P2. So क्या 2P2 is equal to P1 plus 1 first equation. अब इसमें सब को निकालना पड़ेगा सेकेंड इसमें से. minus 3 3 आ रहा है. God. इससे बीटा है ना. like 1 minus P2 times जो कॉमन है वो P1 आता है. P3 आएगा राइट. minus 3 times of 1 minus P. ओके गामा ऐसा P3 आएगा. यहाँ पे P2 is equal to what? कुछ कटने वाला है ऐसे भी. इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन. सो P2 P3 टाइम्स अच्छा वो तो कटेगा ना. वही कटेगा. सो जस्ट 1 minus P2 टाइम्स 1 minus P3. ऑसम. यहाँ पे जो वो वैसे ही इक्वेशन हो जाएगा. So let's see. So 1 P3 minus P2 P3 minus 3 P2. Okay, calm down. Do it properly. Plus 3 P2 P3 is equal to 1 minus P2 minus P3 plus P2 P3, right? इसमें एक P2 P3 टर्म रिमेनिंग है. That's still bad. इसका मतलब क्या हुआ? Just P2 P2 P3 तो सारा क्यों? सीरियसली क्या है ये? 2 नहीं सिर्फ सिंगल टर्म है ना रिमेनिंग. ओके इस तरह से लिखो P2 P3 plus 2 P3 minus 2 P2 is equal to 1. That's the equation. Okay तो करना क्या है इसे? ठीक है.
देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ E3. सो प्रोबेबिलिटी हवा में, राइट? ठीक है ना, हवा में ही बोल रहे हो ना कि कुछ और? आई थिंक हवा में बोल रहे हो. सो जस्ट 1 माइनस पी 1 upon 1 minus P3. That's what you're looking for, seems. Okay. कुछ है इसमें जो अपन कर सकते हैं? But you know what P2 is at least. So उसको इसमें put कर दो. Yeah, that's one thing you can do. So just, P1 plus 1 plus 4 times P3 minus 4 times P2 is equal to 1. That's the equation, right? मुझे क्यों लग रहा है सही से काम नहीं करेगा? Just have a very strong feeling about this. Oh, ये चीज़ times P3 थी, sorry. So P3 times this thing actually. Oh, interesting. That's completely in one and okay. Here. Oh, that is in P2, right? उसको अपने को replace करना पड़ेगा. So ये हो क्या रहा है actually? P2 times P God. P2 times P3 minus P. So P3 minus 2. Okay, just 2 plus 2 P3 equal to 1. So P2 को अपन put करेंगे this thing. P1 plus 1 upon 2. So what? P1 plus 1 times P3 minus 2 plus 4 P3 is equal to 2, right? यहाँ से आएगा P1 P3 minus 2 minus 2 P1 plus P3 plus 4 P3. Not looking good यार. P1 P3 नहीं, ये ऐसे अपन कैसे कर सकते हैं? बिकॉज ये काम ही नहीं करेगा यार. ऐसे कुछ और हो जाए इसमें. ऑन थिंक ये काम ही नहीं करेगा इस तरह से, बिकॉज अपने को जो इक्वेशन मिलेगा दैट्स नॉट. दो इक्वेशंस और 3 वेरिएबल्स, हाउ इज दैट गोइंग टू वर्क? राइट, ये दो इक्वेशंस है और अपने को 3 वेरिएबल्स मिले हैं. कुछ है इसमें करने लायक? आई डोंट थिंक. P1 P3 इसको क्या लिखता हूँ? P1 P3 minus 2 P1 plus 5 P3 minus 4 equal to 0. फैक्टराइज भी नहीं कर सकते इसको. कौन? सीरियसली? नो, इट्स नॉट डूएबल. इट्स नॉट डूएबल. इतना टाइम स्पेंड किया क्यों? A vertical line passing through the point h comma 0 intersects the ellipse something at the point p comma q. That the tangents to the ellipse at p comma q meet at the point r if delta of h for what? Delta h equal to area delta times h. Okay. Wait, what? So it's point h comma 0. Vertical line passing through that intersects the ellipse at points p and q. So कोई भी एक random point है on the axis. उससे एक क्या vertical line passes through it and intersects the ellipse at 2 points. Okay, let the tangents to the ellipse at p and q meet at point r. ठीक है. If delta equal to the area of triangle PQR, right? And delta 1 equal to limit as maximum. Sure. Hey, okay, so like I know it's gonna depend on like this thing. हाँ, कर सकते हैं. पहले तो इसको डिफॉर्म करो वापस सर्कल में, राइट? सो राइट, तुम्हारा जो a है दैट्स इक्वल टू व्हाट 1 एंड b इज इक्वल टू. सो अब एक काम करते हैं, फिर इसको नहीं चेंज करते. सो राइट, तो आपको तो 3/4 करना पड़ेगा, राइट? ओके, एनीवे जब डिफॉर्म करेंगे रेडियस इसका क्या हो जाएगा? 2 बस r स्क्वायर इक्वल टू 4. रेडियस 2 कर डाला और ये ऐसा ही है. एंड देन दिस इज व्हाट्स हैपनिंग. फिर अपन इसको वापस जब डिफॉर्म करेंगे अपने को किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है? एरिया को स्क्वायर रूट ऑफ 3/4. एच ये जब अपन ने इसको रिफॉर्म किया जो भी. सो
ये h है यहाँ पे, and then this is h basically, and then you want the area of this triangle basically, right? Which is what ये चीज इस नीचे से बहुत गंदा वाला है। Some easier way to get this? No easier way to get this. We'll have to do it. So ये h है, ये r है. This thing is what, like square root of, जो base है it's just 2 square root of r square minus h square. Okay. And ये height कितनी होगी? Seriously though, and this thing need to figure it out. You can't, unfortunately. Shit. So theta बोल दो. This angle is theta. This angle also be theta. Yeah. So tan theta is what? Square root of r square minus h square upon what? Upon h. यहाँ पे same tan theta, but यहाँ पे ये वाली side है. So yeah, this is that thing. Like h times of each. So नहीं, okay, ये times. Tan square minus h squared upon h. That is this length. Yeah. So अपने को मिल गया फिर. Then yeah, इसका half, क्योंकि ये एरिया होगा. So r square minus h square की power 3/2 upon h, which is what r है. R square इसका 4 होगा ना. So 4 minus h square की power 3/2 upon h, and then इसका क्या अपने को times 3/4 करना है. So that's the area. अपने को करना क्या है? Delta 1 equal to maximum 1/2 less than or equal to h is less than or equal of delta. Okay, as a function of h. That's what you're saying. अच्छा. So अगर h 1/2 to 1 में है, समझे, then फिर इसका मैक्सिमम और मिनिमम क्या है? This is like 4 minus h square. So this is weird. So derivative directly नहीं check कर सकते, right? No, you can't check the derivative directly. Actually you can. इतना बुरा भी नहीं है. क्या हो सकता है max? क्या हो सकता है? So वो 3/2 बाहर आएगा. 3/2 फिर यहाँ पे आएगा square root of 4 minus h square upon h. Then inside का फिर negative 2h आ जाएगा. ये गया. This thing negative 3 square root of 4 minus h square. और think about it. और जब तुम इसमें डायरेक्टली करोगे just 4 minus h square की पावर 3/2, यहाँ पे just negative 1/x स्क्वायर चला. So all in all it's just negative. मतलब ऐसे से h increase होगा, इसका decrease. Sure. Just to be expected. h increase होगा, ये चीज decrease होगी. And then ये right. h increase होगा, decrease होगा. So maximum to चाहिए, just put h equal to 1 in there. ये हो जाएगा. So maximum is okay. Delta क्या? Delta 1. Delta just sort of 3/4 times. So if 1 put किया, just 3 की power 3/2. So 3 sort of 3 upon 1. Yeah, which is what? 3 times this is 9/4. And delta 2 is minimum, for which you have to put h equal to 1/2. So यहाँ पे आएगा 1/2. तो 4 minus 1/4 upon 1/2 आएगा, which is what is this thing? So this is 15/4 power 3/2 upon 1/2. देखिए 2 ऊपर भेज दो. And this times of square root of 3 upon h. Cool. It's not worth though. Oh, you want 8 upon square root of 5 times. Shit. अपन ने जो निकाला मिनिमम था actually, sorry. So delta 2 is this thing. Delta 1 is maximum, which is when it's 1/2. तो अब ये ऊपर निकाल रहे हैं. You want this times 8 upon square root of 5? 3.4, sorry. Yeah. Okay, that is the thing. Interesting. यहाँ पे 2 आएगा. Okay. So ये हो जाएगा 4. So 4 square root of 3 upon square root of 5 times. नीचे क्या आ रहा है? Just 4 square root of 4, just 4 times of 2. और ऊपर आएगा 15 square root of 15. ये 4 गया, ये 4 गया. ये 2 है. ऊपर का square root of 5 चला गया. So 15 times square root of 10 square root of 3. So just 9. मतलब this will be what? 45/2. Okay, and 90/4. Oh, and we want actually 8 times of this thing. That would be an integer actually. Something is not right about this thing. Simply garbage. Just write down
फेयर पेज। तो क्या था अपना डेल्टा इज जस्ट इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/4 4 माइनस एच स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन h. So अपन delta 1 निकाल, this delta 1 is the maximum which is at h equal to 1/2. So just be square root 3/4 नीचे तो 1/2 नहीं, so square root 3/2 कर डालो, square root 3/2 and plus 1/4 so 15/4 की पावर 3/2. This will be what, square root 3/16 आएगा नीचे, because yeah, and ऊपर आएगा 15 square root 15 which is like 15 times 3/16 times square root of 5. This is what, 45/16 square root of 5, that's delta 1. Delta 2 निकाल लेते हैं. Delta 2 is when you will h equal to 1 put करोगे, so it's square root of 3/4 times 3 की power 3 which is 3 square root of 3 which is 9/4. So ये delta 2. So what do you want? You want 8 square root of 5 times delta 1. So that's like 45/2 though. ये इंटीजर में कैसे आ गया यार? इसमें गड़बड़ की इन लोगों ने. ये इसमें गड़बड़ हुई है. What went wrong? This should have worked though. 1/2 में होगा ना यार. So ये तो काम करना चाहिए था, ऐसे क्यों नहीं काम कर रहा था? Square root of 3/4 sure. Unless it's not square root of 3/4 then that makes sense. But मैंने तो सही से किया. Should have worked. Oh. Oh yeah, okay. Square root of 3/2 चाहिए इसमें. Not right. तो हर चीज को 2 टाइम्स कर डालो. मतलब एक्चुअली में डेल्टा 1 होगा 45.8. ठीक है ठीक है ठीक है. So 45 और this thing is like ये चीज. So 45 minus 4 ठीक है ना 36 which is what 9. So 9 is answer. 9 का 9. 58 का मर गया. 58 मैंने किया नहीं क्या? Right, वो किया. Next 60. Consider the set of 8 vectors v is equal to this thing. 3 non-coplanar vectors can be chosen from v into power p ways, then p is 3 non-coplanar vectors can be chosen from v from this set of vectors in 2 power p ways, then p is what? Belong to negative 1 comma 1. Okay, this is bad. Non-coplanar vectors मतलब क्या? Determinant जो रहेगा, you want that to be non-zero. How do you do that? So like ऐसा हो रहा है ना, ये a1 b1 c1 and then a2 b2 c2 and then yeah whatever. To think about it. Oh yeah, like ये same चीज आने वाली है 1000 बार. Right. So 1 1 negative 1 ये बस वेक्टर को तू रोटेट कर रहा है बार बार. ओके ओके ओके. बिकॉज नहीं 1 1 1 भी काम कर सकता है राइट. तीनों तो अलग नहीं सकते ऐसे थे. तो अपने कितने के टाइप्स हो रहे हैं? 1 1 नेगेटिव 1 आ रहा है. ये एक टाइप का वेक्टर हो सकता है 1 1 1 आ जाए. सारे नेगेटिव 1 भी सेम ही टाइप का आएगा. एंड देन इसके रोटेशन हो सकते हैं. क्या इसके रोटेशन क्या होंगे? 1 नेगेटिव 1 1 एंड देन negative 1 1 1. Yeah, that's the thing. So rotations आएंगे इसके. And what you want is the non-coplanar vectors. ऐसा अजीब हो रहा है यार ये. So when can vector be coplanar? तो that is the thing. उफ. जहाँ पे भी 1 1 1 आएगा उसके बारे में सोचते हैं. इनमें से कोई भी एक को तुम्हें let's just say yeah, so इनमें से कोई भी एक को डॉट कर डालो बेसिकली. नहीं डॉट नहीं, क्रॉस कर डालो. राइट. राइट. एक जो रहेगा वो 1 अपन कॉमन निकाल लेंगे दैट केस. इसमें लिया और ये लिया, इनसे एक 1 कॉमन निकला और फिर ये जो है 1 कॉमन निकला. ये 1 कॉमन 1. राइट. इट्स लाइक वो नेगेटिव है एक दूसरे के. ओके इंटरेस्टिंग. अपने को क्रॉस करना है. सो जस्ट
ये क्रॉस ये तो जीरो हो जाएगा. It's like this thing, a vector plus b vector cross a vector minus b vector, जहाँ पे a vector और b vector perpendicular. Okay, so ये what a cross a तो जीरो हो जाएगा. Okay, this is just minus a magnitude wise. और यहाँ पे क्या आएगा प्लस, सो a क्रॉस एक्चुअली यहाँ पे आएगा प्लस b क्रॉस a, तो जीरो हो गया. यस, which is yeah, so that's the thing. मतलब यहाँ पे आएगा 2b क्रॉस या फिर जो भी होगा, राइट. Yeah, starting not make sense as long as it's clear. It won't work. ये बहुत लंबा हो जाएगा ये. This doesn't make any sense. ये भी नहीं कर सकता डिटरमिनेंट जीरो कब होने वाले. जस्ट लीव दिस. नेक्स्ट, ये हो गया. मल्टीपल चॉइस कर लेते. फिजिक्स करेंगे ना पहले, राइट. सो ये सब पार्ट में जाए, राइट. यहाँ से कुछ प्रॉब्लमेटिक शुरू हुआ था. ये तो हो गया था अपना, ये भी हो गया था ना. ये कैसा सिंगल करेक्ट थे एंड देन दिस वाज मल्टीपल चॉइस. ये किया था अपन ने एंड ओह या ओके. ये कैसे इजी होगा. Which of the following is not correct? N transpose M n is symmetric or skew symmetric according as M is symmetric or skew symmetric. विचित्र है ये. I don't know. Mn minus Nm. This is skew symmetric or okay. This is very weird. I have no idea. So कैसे करते हैं. Following is not correct. Joint of M times adjoint of N is equal to adjoint of M times N. बेसिकली ऐसा होगा ना कि M inverse times N inverse upon magnitude of M, magnitude of N, magnitude क्या बोलो डिटरमिनेंट बोलो उसको, is equal to adjoint of M times N is just Mn complete inverse अपॉन डिटरमिनेंट. उसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ. यस, दैट्स डूएबल. ये कर जाएंगे. बट देन एम एन का इनवर्स, दैट्स नॉट एम इनवर्स एन. इट्स लाइक या ओके, दिस शुड बी एन इनवर्स एन इनवर्स. या दैट्स मोर लाइक इट. सो ये तो नहीं, ऐसे काम नहीं करता है. तो मैं इसको कम्यूटेटिव नहीं कर सकती. दिस इज नहीं, ये करेक्ट नहीं है. मेक एनी सेंस. सो नो, दिस इज नॉट करेक्ट. व्हाट एल्स. सो इसमें डी तो आएगा 42 का डी. और क्या है. Mn is symmetric for all matrices M and N. What? अच्छा, all symmetric matrices. I don't know. ये मैंने कभी किया नहीं. So for symmetric matrices. अपन 3 to 3 ले रहे हैं. What about if I just take 2 into 2 or something, right? So 2 into 2 क्या होगा. A यहाँ पे symmetric है ना. So पीछे हम डायगोनल कुछ भी डाल सकते हैं. सी सी आ जाएगा यहाँ पे. Transpose and multiply करना भी सही रहेगा, right? Look, I don't know. I don't know what this one. Wish I knew, but मुझे नहीं पता. So yeah, just move on. Okay. और क्या था इसमें. fx is equal to x sin of pi times x in, for all natural numbers and f dash of x vanishes at x sin of pi of x for all natural numbers and f dash of x vanishes at a unique point in the interval n to n plus 1 upon 2. So ये जीरो कब होगा. f dash, right? f dash निकाल. f dash is sin of pi x plus pi x to sin of pi x, and this has to be 0 at. So जब ये 0 होगा, that means like tan of x, like tan of pi x is equal to negative pi times x, right? So tan of pi x, that's like ये तो ऐसा होता है. Initially secant square आएगा. So at x equal to 0 just 1. So इसका जो डेरिवेटिव है tan का, it will just be pi, right? और ये negative pi है in fact. Wait, what? Oh yeah, it's just negative pi. Oh, जब ये equal होगा it's just negative pi. तो ये positive है initially. So tan of pi is like this thing और negative ऐसा हो जाएगा. So that's why. So 0 to हाँ negative pi upon pi to में तो कभी इंटरसेक्ट करेंगे नहीं.
और उसके ठीक बाद में करेंगे, राइट, और यही बार इंटरसेक्ट कर सकता है, just keeps on going, so it will intersect, yes, in every region like this thing. So ये नेगेटिव पाई पॉइंट से पाई पॉइंट टू पे है, फिर पाई पॉइंट टू से 3 पाई पॉइंट टू में, राइट. सो लाइक अपन पाई पॉइंट टू बोल एक्चुअली में इट शुड बी व्हाट, ये तो पाई एक्स है ना. सो x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2y. सो नेगेटिव 1 अपॉन 2 से 1 अपॉन 2 में नहीं करेंगे, देन 1 अपॉन 2 से 3 अपॉन 2 में करेगा ये, सो ऑन. सो a unique point in the interval, this interval, okay, interesting. Oh, अच्छा नहीं, इसमें भी कर रहा है at x equal to 0, of course. So yeah, yes, it's a unique point in the interval, not n to n plus 1 upon 2. It's so जो difference रहेगा वो 1 का चाहिए अपने को, n to n plus 1. नहीं नहीं, n to n plus 1, how will that work? ये होते हैं, ये 2 पॉइंट पे कर रहा है, doesn't make any sense. So इसको एक्सक्लूड कर डालो, then it won't, right? So फिर एक ही पॉइंट पे करेगा, so मुझे ऐसा करना पड़ेगा. So यहाँ से यहाँ पे, so ये भी सॉल्व होगा, right? So एक पॉइंट पे कर रहा है तुमने इसको, it's very weird. Just include किया, that's why it works out. Fine, then yeah, okay, maybe you can say so, right? Yes, yes, actually it's correct. So a unique point in n to n plus 1. 2 points in the interval n to, no, it's C, of course. So 53 का C is correct. But ये तो सिंगल टाइप नहीं था ना, ये कैसे हो गया फिर? A unique point in the interval n plus 1 upon 2 to n plus 1. 1 upon 2 से 1 तक की बात करते हैं, यस, एक यूनिक पॉइंट पर है. सो फॉर 0 to 1 upon 2 उसमें तो नहीं हो रहा है, बिकॉज wait, n plus 1 upon, so just put n equal to negative 1 or something. So negative 1 upon 2 से 0 तक intersection ही नहीं है इसमें तो, yeah. So no, this won't work, it doesn't work uniformly, right? Okay, ये गया, and what else? हाँ बस इतना ही ना, 2 points in the interval n to n plus 1, ये तो कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया, so ये काम नहीं करता. 3 point in the interval n to n plus 1 upon 2, इसमें तो इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा है, तो ये तो पहले ही फेल हो जाता है, उसमें इसमें 0 इंक्लूड नहीं कर रहे हो. सो हाँ, नेक्स्ट. वेट, क्या नेचुरल नंबर? ओह, यू शुड हैव टोल्ड मी, मैं अभी तक क्या फिर फालतू पने कर रहा हूँ. नेचुरल नंबर्स, सो ओह या, यू शुड हैव टोल्ड मी रियली. n इक्वल टू 1 है ना, सो 1 से जैसे 1/2 है, हाँ ये इंटरसेक्ट कर रहा है. वेट, नहीं नहीं नहीं, 1 यहाँ पे स्टार्ट होगा, सो ओके, नहीं ये इंटरसेक्ट नहीं है, नहीं, एंड दिस थिंग plus 1/2 is some point like this, यहाँ से यहाँ पे. So yes, it will actually intersect. ऐसा जाएगा. So yeah, this looks correct. So B looks correct. T3 का B भी है, A नहीं है, and then C है. Next question. Rectangular sheet of fixed perimeter with sides something having length, okay, and the ratio of 8:15 is converted into an open rectangular box by folding after removing squares of equal area from all corners. If the total area of the removed squares is 100, the side length, the total area, the side length is 5. Side length 5 है. Okay, और क्या 8:15 length in the ratio, ठीक है ना, 8 और 8:15 whatever. Wait, this doesn't make any sense because total area is 100, then this must be 5, of course, because 4 times that, so ratio it, okay, ratio is 8:15, so 8k, so 15k बोल दो, whatever. Okay, so 5 तुमने हटा दिए, right? Resulting box has maximum volume. The then the length of the sides of rectangular sheet are. Sure. So for this particular k, हमारा जो x ऐसा, okay, something, तो x पर x हमने निकाल दिया.
right, okay, that makes sense. So क्या हो जाएगा 8k minus 2x, okay, times ye, which is 15k minus 2x, and that has of height, which is just x. So this should have what? Um, then the okay, this should have a maximum volume. This is the thing. This x should be 0. इसका डेरिवेटिव लो and then इसका डेरिवेटिव लो and बहुत लंबा हो जाएगा यार. Natural log उसका डेरिवेटिव हाँ वो 0 होना चाहिए. That's a better thing. So natural log of this इसका डेरिवेटिव 0 होगा. So 1 upon x plus 1 upon 15k minus 2x, but then this times of -2. Similarly, -2 upon 8k minus 2x. This should be equal to 0. Okay, and somehow x is equal to what? 5 works out. So हाँ ठीक है ना, quadratic equation है बस ये 10 is equal to 0. Let's try it out. तो क्या होगा, ये इसको उधर भेज दो. मतलब 1 upon 15k minus 5 minus 10, okay, plus 1 upon 8k minus 10. That's equal to 1 upon 10 basically. So solve this is 23k minus 20 upon 5 times of k minus 2 times क्या है ये चीज़ 2 times of 4k minus 5 is equal to 1 upon 10. तो ये तो गया. This means that 23k minus 20 is equal to 4k squared minus 8k minus what 5k मतलब k minus 13k plus 10, right? 4k squared minus 46k, yeah, okay, minus plus 30 is equal to 0. Cool. So 2k squared minus 23k plus 15 equal to 0. 15 times 30 को सोचो कैसे करूँगा मैं. 23 चाहिए ना, तो it's an odd number, तो 2 एक साइड में रखना पड़ेगा. So क्या 3 times 5 है, तो it actually won't work. This just won't work. It's going bad. 30 times what gives this thing? नहीं 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 काम ही नहीं कर रहा यार. Shit. Oh, it's 36. Right, that explains it. So यहाँ पे 36 tends to be यहाँ पे 1 and it should be 18. So 18, right? So 30 को break करो, that becomes 18. But you can't. You can't do that. That doesn't make any sense. So इसको क्या ना मैंने 8 plus 15 is 23. 23k minus 20 upon 5 निकाला, 2 निकाला, k minus 3k minus 2. Oh god. This should be things like 23k minus 20 is equal to, yeah, okay, so 12k square minus 8k, then minus 12k, wait no, थोड़ा काम नहीं कर रहा है, minus 15k plus 10, so 12k square आ जाएगा minus 23k, cool, so minus 46k plus 30 को लिखिए मतलब 3, 6k square minus 23k plus 15 equal to 0. अब सोचते हैं, should be what 30 times 3 and 9, 90 को तो break कर, that this happens. Like what, how do I break this in that case? We want what k is, right? Lengths of the sides of the rectangular sheet are, wait 8 minute, what? अच्छा हाँ, okay, in this form of course. So think क्या k की value कुछ that happens. You want what 90 को break करना है, it's like 2 times, मतलब odd करना है ना, so basically odd होने वाला है. 6 times 30, no, it's not working. 5 times 45, sorry, what? No, 5 times of 18. Oh, yeah, that was. So 6k square minus 18k minus 5k plus 15 equal to 0. 6 comma 6.
k minus 3 divided by 6k minus 2 equal to 0. Yeah, okay, that makes sense. So k equal to 1 upon 2, that doesn't make sense. Okay, k equal to 3 is the thing. k equal to 3 मतलब ये क्या होगा? 24 and 45, which is a and c. Next question. 24 and c. Next question. 55 करते हैं. A line passing through the origin is perpendicular to the lines, okay, L1 and L2, then the coordinates of the point of L2 at a distance of 17 from the point L and L1 are the point on L2 at a distance. Lines, okay, मैं दो दे दी मुझे. Coordinates of the points on L2 at a distance of square root of 17 from the point of intersection of L and L1. L1, wait, L क्या है exactly? L1 and L2 तुमने मुझे दे दिए. Coordinate of points on L2 at a distance of line L is passing through the origin. Okay, it's perpendicular to these lines. Okay, specify कर डाला, right? Yeah. Sort of 17 from the point of intersection of L and L1. तो basically क्या? हाँ, समझा. Just perpendicular to that and then some point. Origin है क्या point पे से? It's this thing. 3 plus. I don't want to do this यार. बहुत ही खराब टाइप का हो जाएगा. Right. तुम्हारा जो प्लेन है लाइक दिस थिंग, इससे परपेंडिकुलर है, राइट? ओके, सो देन वेट, ये अगर परपेंडिकुलर, व्हेन विल दीस इवन इंटरसेक्ट इन दैट केस, राइट? इट दे वोंट इंटरसेक्ट एक्चुअली. इट्स परपेंडिकुलर दैट अनलेस, अब वो जिस प्लेन में है, इट्स बोथ ऑफ दीस लाइंस. तो ओनली वन वे कि अगर ये जीरो हो गया, L1 कभी जीरो हो सकता है क्या? नहीं हो सकता. दैट डजंट मेक एनी सेंस. मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात कर रहे हो, बट वो है ही कहाँ पे? व्हाट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? हाँ, कैन दीज इंटरसेक्ट? कोई रैंडम पॉइंट दिया तुमने एंड तुम्हारा जो प्लेन दिया है, ओके, 0,0 पे नहीं है ना, ये तुम्हारा जो प्लेन में से दिया हुआ है एंड देन परपेंडिकुलर टू दैट वेक्टर यहाँ पे अटैच किया. नो, इन दैट केस ये जो लाइन से इंटरसेक्ट नहीं कर सकते. या हाउ कैन दे इंटरसेक्ट? कैसे? आई डोंट नो. ठीक है, ट्राई करते हैं, स्टिल क्या पता. सो इसका वेक्टर क्या है? इसका वेक्टर है 1 2 2, देन दैट क्रॉस्ड विथ 2 2 1. चलो, which is, so यहाँ पे जगह 2 minus 4 minus 2, फिर 4 minus 1 3, और यहाँ पे आएगा 2 minus 4 minus 2 once again. So it's like 2 minus 3 2, right? That's the thing. So right, तो क्या बोल रहे हैं अपन? 2 minus 3 2 times, let's say k, right? So this times k is equal to ये चीज 3 minus 1 4 plus ये कौन सा वेक्टर है? अभी तो क्या था? 1 2 2, this times p, right? Yeah. W का जब ये तीन वेक्टर्स कोप्लेनर हो, and are these coplanar? 3 negative 1 and 1, that's just vector of one dimension. No, they are not, of course, because ये कैसे सकता है? Can they be coplanar though? अच्छा, अगर इसके प्लेन में ओरिजिन, ओके, दैट एक्सप्लेन्स इट. सॉरी, ऑलराइट, दैट डज एक्सप्लेन इट. ओके, सो इसमें ओके, समझा मैं. राइट, सो जस्ट फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ऑफ कोर्स गेस करो. ये 3 आ रहा है, देन not really helpful though. uh, what upon 2 करके क्या होता है ना? और तो मैं पागल हो जाता है. what about this को k equal to 2 and this is equal to 1? won't help, won't help. mm, how can this help? See, what you want is like 2k minus t is equal to what? 3, and
2k minus 2t equal to 4, like basically k minus t is equal to 2, right? And also 2k minus t equal to 3, which means k is equal to 1, which means t is equal to -1. So जो last equation रहेगा तो -3k just -3 is equal to -1 and then t is just हाँ ये काम करता है. So you got the thing, मतलब कि yeah, you got that point. K equal to 1 मतलब कि जो point है is 2 -3, 2, right? करना क्या है इसका? Right, coordinates of the point and 2 at a distance of something from the points for representation of n and l1. I don't like this particularly. क्या है ये l1? इसके दो अपनी निकालने पड़ेंगे. I hate this. So we will need the t values. ठीक है. अच्छा l2 है. We need the s values. Whatever. 332. इसको subtract करना पड़ेगा. 1 then 6 and then ये 2 था ना. हाँ ये 0 हो गया. So 1 6 comma 0 plus s times of this vector 2 2 1, right? This has magnitude what? Magnitude of 7. So 7, yeah, sort of. So what that means is like 1 plus 36 plus yeah, not good. चलो करते हैं whatever. Just s square times 4 plus 4 plus 1 9 plus the dot product, so like okay, 2s this dot that, which is just 2 plus 12, that's equal to what? 17. So 9s squared plus this is what? 14 times 2 is just 28, 28s. This is 37 minus 17 is just 20, so that plus 20 is equal to 0. कौन सा काम करता है? 20 times 9 and you want 28 somehow, so like 180 को break करो. 6 times 30, no, 28, come on. 28 as per that would have made sense, but it's not. 9 as well. It's not even a multiple. What is this? Why is this so hard? 28s, okay. अच्छा, so सब में 1/3 वगैरह आ रहा है, right? Let me guess. We will have to do that thing. So 9 से multiply कर डालते हैं. So that, or let's just say 9s is equal to x. So we want x square plus 28x plus 180 is equal to 0. So 180 को break so that it costs 28 or something. अब इस वही चीज़ है, but don't think about it. 10 times, oh yeah, 10 times 18 of course. So this can be written as x plus 10 times x plus 18. So x equal to negative 10 and negative 18. So 10 upon 9 and negative 18 upon just negative 2, right? ये दो चीज़ें आ रही है इसमें से. इसको इसमें पुट कर देते हैं. Let's get the thing. So इसको बाहर निकालता हूँ. क्या था? 3 plus, तो s की वैल्यू क्या क्या होगी? Negative 10 upon 9 and negative 2. Negative 2 मैं पुट करके देखते हैं. So it's just what? 3 plus 2s is just 3 minus 4, right? So minus 4 is just -1, and then you get 3 minus 4 once again, just -1, and then 2 plus s, which is 0. So -1, -0. So b works. Or we'll put that thing. It's just take out 1/9. बाहर निकल के 27. 27 minus 2 times of that is 20. Then 27. Once again same stuff. Okay. और यहाँ पे बचे 2 plus s. So 18 is s, which is just -10. This is 1/9, and then you got 7 7 and -8. So 7/9, 7/9, and this should be positive 8, sorry. So 8/9. So D is the answer. So इसका D. Okay. D. हाँ चलो हो गया फिर. चलो पापा ने मेरे बहुत कम हो गया. Go to physics. हाँ मुझे नहीं चलेगा. I just know that. मीजर टाइप तो हो गया फिर मतलब करते बैठे. ओह ये चीज़ें मैं कर सकता हूँ. So
benzene and naphthalene form an ideal solution for this process. The true statement is so yeah, it is right. Delta H is 0, so D is correct. 34 का D कर दो और क्या है डेल्टा S सिस्टम इज पॉजिटिव यस वो अपने आप हो जाता है सो यस D is also correct and delta surrounding equal to 0 very correct because delta is equal to 0 and delta G is positive no so B C and D these are two statements for 34 और क्या ऐसा कुछ और है initial rate of hydrolysis of methyl something okay by we कैसे ढूंढूंगा इसे is 1 upon 100 of a strong acid HX. Oh, अच्छा to H plus concentration देखनी right? So methyl acetate hydrolysis. Methyl acetate is like what? Methyl acetate. So something like this. Wait, what? Oh, okay, sorry. Methyl is पे attached. Fine. So you want to hydrolyze that. So पहले क्या होता है H plus होता है उसके बाद इसमें slow step कौन सी इसमें break करना होता है bonds. Yes, that is the so concentration of ये वाला compound अपने को देखना है. तो वो कॉन्सेंट्रेशन हाई कब रहेगी बस ये जो स्टार्टिंग कॉन्सेंट्रेशन तो सेम ही है राइट के ए ऑफ एच अपने को दिया हुआ है एंड देन यू हैव टू ब्रेक दैट एंड उसके बाद अब क्या पता है ओके एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड वही है ना स्लो स्टेप यस तो ये ब्रेक करना कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड सो फॉर दैट want this guy's concentration actually उसकी concentration कैसे निकालेंगे just concentration of जो भी कुछ भी constant रहेगा that's the concentration of ये चीज initial अब देखो initial चाहिए rate so initially तो वही concentration at that times yeah and that times of the वो equilibrium है and concentration of H plus so concentration of H plus is yeah उससे proportional रहने वाला है okay so strong acid HX 1 molar is just like इसका 100 मतलब इसके कुछ concentration of HX sorry H है वो 1/100 मोलार है so concentration is 10^-2 that's what you're saying of H plus okay और क्या है ये weak acid है HA 1 molar okay cool so what do you know like X square constant of H plus square upon इसकी concentration which is 1 molar that's equal to our Ka yeah so Ka will just be 10^-4 yeah looks good it's actually very small or one के comparison भी काफी छोटा है so yes it works out so K is 10.84 approximately so A कहाँ पे चला गया A right और ये multiple choice में था अजीब है yeah it was actually multiple choice it was right or was it not हाँ ये multiple choice है sorry multiple correct है हाँ तो क्या हुआ अपना अभी हुआ कहाँ पे मर गया सब कुछ ठीक है ये हुआ जॉन है फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड ये नहीं चाहिए अपने को नो नॉट इंटरेस्टेड व्हाट इज दिस थिंग ADT है 4 माइनस इथिलीन डायमाइड ओके ठीक है नंबर ऑफ NCO ओके अच्छा बढ़िया दिस इज एक्चुअली डूएबल सो CO राइट सो कैसा रहता है ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन ओके या लाइक इथिलीन डायमाइड टेट्राएसिटेट सो हर एक में एक आएगा सो माइनस 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 या फिर एक दो and you want what basically the number of NCOO so तो ये रिंग ऐसी हो जाएगी नाइट्रोजन लाइक दिस थिंग और एक तो ऐसे ऊपर से आ रहा है राइट या एक तो ऐसा है बहुत अजीब है ये वैसे दिस इज वन थिंग ओके तो ये एक बॉन्ड एंगल होगा इन केस फाइन समझा सो ये एक बॉन्ड एंगल देन सिमिलरली यहाँ से एक बॉन्ड एंगल ये नीचे जाने वाला है kind of weird actually
Oh, this should be actually like this thing. So यहाँ पे रखना है, right? Okay. और क्या हो रहा है इसमें? बाकी भी तो आने वाले थे, यहाँ से ऑक्सीजन एंड देन ओके, और यहाँ से ऑक्सीजन। So yeah, whole number of these bond angles मतलब like ये एक, wait, you mean bond angles as in like actual measure of angles की क्या? ये एक, ये दो in that case, और क्या? I guess नहीं तो मैं सारे ले लेता that is fine. So हमारे इसमें क्या, चार ऑक्सीजन से अटैच्ड और दो नाइट्रोजन से, so 4 times 2 right, 8 bond angles। वैसे तो 2 हो गया, वैसे तो 2 हो गया अगर ये मैं 8 कर देता हूँ, 38 का आंसर 8 होगा। वेट, ये क्या इंटीजर टाइप है? ओके, okay, 39 total number of lone pairs, I don't know, melamine, I don't know। ये टाइप की मुझे करनी चाहिए करके। वैल्यू ऑफ हीरो की वेवलेंथ ऑफ हीलियम एट -70 so at 200 Kelvin is m times that of de Broglie wavelength of neon at 727। masses दी अपने को, okay, so it's like h upon p, but then p is the square root of kinetic energy times 2 times kinetic energy times mass, right? So proportional to 1 upon square root of k times m, or k is proportional to actual temperature. Yeah, because yes. So yeah, that's the thing, of course. M times that of the wavelength of this thing at 27 Celsius. M is, so इसका क्या होगा 1 upon square root of, so इसका मास कितना है? एटॉमिक मास ऑफ हीलियम एंड नियॉन। हीलियम का अपन निकाले, so हीलियम का जस्ट 1 ले लो और इसका 5 ले लेते, और टेम्परेचर क्या रहेगा? so इसमें 200 है और इसमें क्या है? ओके, इसमें लाइक 300, 1000। ओके, सो इसमें 5 टाइम्स हो गया, मतलब यहाँ पे 5 आ रहा है कि 1/5, 1:1/5, मतलब कि हीलियम का 5 है डिविजिबल, तो इसकी 1 रहेगी। दिस इज 5 टाइम्स द डिविजिबिलिटी ऑफ नियॉन, सो 40 का आंसर 5, 39। हाँ चलिए, मूव ऑन। ऐसे और दो जिसमें वी डोंट हैव टू वर्क एक्चुअली। ये क्या चीज़ है? Among PQRS, the aromatic compounds is or R. PQR is this P, this gives Q, this gives R, this gives S. Aromatic compounds are, अच्छा ठीक है। Well, no, it's not actually aromatic. Because ALCH तुम बाहर निकालोगे, just positive charge हो रही है। No, 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 no. NaH, okay. So H minus इसको उखाड़ के ले जाएगा, just negative charge हो रही है। Yeah, it is in fact aromatic. So Q, yes, it's aromatic. और क्या है? NH4 2CO3। इंटरेस्टिंग। और इसका एग्जैक्टली तुम कर क्या रहे हो? What are you doing with this? I don't think he's saying वैसे aromatic, ये रिएक्शन है ही क्या आखिर? CO3, maybe that is the important part. नहीं, मैंने कहीं नहीं देखी ये रिएक्शन, so I don't know about R. Okay, what about this guy HCl? So इसमें H plus आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे 3 है, and it's like yeah, it's aromatic, it's gonna become aromatic actually. So this looks cool, ये सही है। ये मुझे नहीं पता इस बारे में क्या सोचूं मैं। uh, separate amide or something, right? CO3, yeah, like this thing, and then you are applying that over there, so maybe just nitrogen attach हो जाएंगे or something like that. I don't see how is this aromatic though. Okay, whatever. So ये मुझे नहीं पता कैसे करते हैं। Yeah, S is aromatic and Q is aromatic. So I think B and D. So क्या है ये क्वेश्चन से? 32 का B and D। कुछ और चाहिए मुझे। लास्ट आधा घंटा बचा है। Oh God. सेकंड आइसोमेरिज्म कौन सा स्पेसिफाई नहीं किया, मैं नहीं कर रहा इसको। हाँ, ये तो अपन वापस उस पे आ गए।
Yeah, this is it. Let's go to physics. ये तो हो चुका था ना? Yes. ये तो पता नहीं कैसे करते. Uh, oh, ये शायद मैं कर सकता हूँ. The arrangement of X minus ions around A plus ions in solid AX is given in the. So this is what octahedral void. Okay. The radius of X minus is so under A plus है, I assume. Okay. Radius of A plus is it should be more than square root of 2 minus 1 times ये चीज, so 250, right? Which is like 1.4 approximately times 1.4142 actually, but whatever. And 250, so 1.4 ले लो, तो ये 14 times 25, right? Which is कितने प्रेसिजन पे चाहिए अपने को? हाँ, अच्छा खासा डिफरेंस है. So 50 times 7, which is 350. Wait, what? No, something's wrong about this. क्या गलत हुआ? Oh, minus 1, sorry, so 0.4 times this thing, 0.414 जो भी है, times this thing, so 4 times 25, 100 के around. Okay, तो और precision चाहिए रहेगा इसमें. So 0.414 2 times 250 यानी कि क्या 4.142 times 25. Let's do it. So यहाँ पे जगह 100 1 is times 25, so 25 मतलब यहाँ पे 2.5 आ गया, then this times 4 is small, so 100 यहाँ पे 3 आ जाएगा, and then this is like 50, so it's like 104 or something. Yeah, it looks cool. So 104 के पास में, which is A. 25th का आंसर A. Wait, उससे बड़ा चाहिए ना? So how is 104 going to work? It won't. But यार J ऐसा सारा सोचा मत. Yeah. 25th आंसर A. वहाँ पे चला गया. So even though ये incorrect रहेगा because उससे बड़ा चाहिए अपने को, but whatever. I'm not assuming 125 अगर सब कुछ होना चाहिए, but whatever. ये मुझे नहीं पता. मुझे नहीं पता. I don't know. Just move on. Physics. Okay, fine. नीचे टाइप कर लेते हैं. नहीं तो मेरे को कुछ आ गया. The circuit shown in the figure. ये नीचे टॉपिक क्या है? नहीं. ये है. The work function of silver and sodium are this and this, respectively. The ratio of the slope of stopping potential versus frequency plot for silver to that of sodium is. Work function दिया है, ratio of slope of stopping potential versus frequency plot. Okay, so V is equal to, wait, क्या is just slope? ठीक है, कर दूंगा कभी. So E times V, that's the work done, that's equal to the phi thing, right? Yeah, because something's weird about this. So वो उखाड़ के ले जा रहा है, बेसिकली ऐसा बोलिए. Yeah, X-ray reduction जैसा होता है ऐसा उखाड़ के ले जा रहा है वो. So that just means E equal to phi. Yeah, मतलब लास्ट में जाके स्टैंडर्ड जीरो हो जाएगी. That is wait, नहीं, stopping potentials. You want to. Oh, okay, frequency of photon incident, right? So HF minus EV, or yeah, that is the energy loss. अब जिसकी energy रहेगी, which is supposed to be zero. Wait, नहीं, HF minus phi minus EV is equal to zero. So EV is equal to HF minus phi. So like V is just H upon E times F minus phi. Okay. The ratio of slopes is the same. Come on, it's the same thing. Because H upon E है in both cases. Yeah, that makes sense. So 16th का answer 1. It was easy. 17th. A freshly prepared sample of radio isotope of half-life something has activity this thing is centigrade per second. Given an issue of the fraction of initial number of nuclei that will decay in the first 80 seconds after preparation of the sample. Okay. Half-life दी अपने को. Activity. Wait, what? Activity क्यों दी अपने को? How? I don't care about this thing. Okay, fraction पूछा ना अपने को. Initial number of nuclei that will decay in the, so just 1 minus e power negative 80. That is the fraction for 80 seconds, right? Yeah.
So करते हैं फिर इसको just like 1 minus 1 upon 2 to the power of t upon t half, which is like 80 upon ये चीज. God. So 80 upon the half life. Oh God. ये तो गंदा हो रहा है यार. 80 upon 1386. I have to figure out this somehow. 1 minus 2 की power ये चीज. It's a very small number, don't you see? So we can actually approximate it. Yeah. ये ऐसा हो जाएगा ना 1 minus 2 तो e की power 80 upon 1386 times natural log of 2 so approximate कर रहा तो as e power is equal to 1 plus x basically. So this is just it should be negative on that, sorry. So yeah, this will just be what 80 upon 1386 times natural log of 2 approximately. Round off वगैरह करना है कुछ I don't know. So 80 times natural log of 2 is क्या 0.693 दिया 693 which is going to be like 8 times of 693 times 10 power negative 2 upon 1386. So yeah, 2 times of that of course because yeah, so just 4 times 10 power negative 2. That's what this thing will be. Wait, what? That's half. That is a fraction of course. हाँ तो wait, but fraction में तुम्हें कैसे दे सकता हूँ आखिर because oh god, not good man. Anyway, already 0.04 हो ही चुका है तो उसके आगे करने की जरूरत नहीं है 0.04 17 का आंसर यहाँ पे चला गया 0.04 18 करते हैं A particle of something mass is moving with one-dimensional integral force that delivers a constant power to the particle. If the initial speed is 0, the speed after 5 seconds is the constant power to the particle. If the initial speed in meter per second of the particle is 0. Power, okay, fine. Initial speed to 0 बोलिए. Speed after 5 seconds. Come on, yeah. Power times time. Constant power, है ना? Yeah. So just 1 joules. That's just what? Speed, right? Seriously, 1 equal to half times like 0.1 kg v squared. ये कैसा क्वेश्चन था आखिर? Are you serious? Oh, 5 seconds. Okay, you should have told me. So I thought it's 2 seconds or something. So it's 5 upon 2 is equal to 0.1, 1 upon 10. V squared is like v squared is just equal to what? 25. V equal to 5, so 5 meters per second. So 18 का आंसर 5. मुझे पहले फिजिक्स करना चाहिए था, ये इजी है. 19th. Uniform circular disk of mass something radius something rotating with an angular velocity of 10 radians per second on its own axis which is vertical. Disk है mass and radius is given rotating with an angular velocity of 10. Okay, on its own axis. Okay, two uniform circular rings that be placed symmetrically on the disk in such a manner that they are touching each other along the axis of the disk. Okay, समझा. Assume that the friction is large enough. Okay, समझा. Assume that the friction is large enough such that the rings are at rest relative to the disk and system rotates about the original axis. The rings are at rest relative to the disk. Okay. System rotates about the original axis. The new angular velocity of the system is. अच्छा अभी तुमने रखा और फिर उसके बाद okay you should have said so. Right. Okay. So क्या angular momentum conservation, right? Okay, yeah, okay, sure. So अब क्या इनर्शिया हो गया इसका? So initially क्या था just mr squared upon 2. अब है plus 2 times of small m. अरे यार ये 3 upon 2 आएगा ना? ठीक है. So हर एक का कितना हो जाएगा 1 plus 1 upon 2 plus 1 actually 3 upon 2 mr squared. So it's like plus 3 mr squared. So small mr r squared. No, it should be r upon 2 squared. Yeah, it should be r upon 2. क्या इनका रेडियस है? So radius उन्होंने 0.2 दिया है, which is half of this thing, right? Okay.
whatever. So star upon 2 plus r squared upon 4. Yeah, that's the new inertia. This times what? Our omega, which is equal to omega naught times m capital R squared upon. Yeah, that makes sense. So omega is just equal to omega naught times 1 upon all that. So just capital M upon capital M plus 3 small m upon 2. That makes sense. ठीक है, करो calculate. omega naught capital M कितना है? Uniform disk of mass 50 kg whatever. 50 upon V50 plus 3 upon 2 times of this guy's mass. Yes, oh god. Yes, that should be the thing. Okay, or yeah, what is this mass? Inka mass कितना है? Each of mass 6.25 kg, which is how much? This comes for like 24, 25 upon 2. Yes, 25 upon 4, not 2. Okay, ये which is just what omega naught 25 हर जगह से कटा दो, so just 1 upon 2 plus 3 upon 8, right? Yeah, which is omega naught ऊपर 8 भेजा upon क्या है ये 16, 16 plus 3 is 19, so 8 upon 19 omega naught. और omega naught कितना था रे? 10 radians per second, so 8 upon 19 of that thing. Okay, 80 upon 19, right? Yeah, radians per second. Cool. I guess that's the thing. Should be यहाँ पे कर डाल दे so. So 80 upon 19, let's do it. पहले क्या लगने वाला है अपने को? 4, yeah 4. So minus 4 and 36, which is 76 over 4, but the point is 40. So for 40, I guess 2. Then that's minus 38. फिर यहाँ पे 20 आ जाएगा. So this 1 minus 19. यहाँ पे आएगा 1 0. So 0. So 4.21, right? 19 का आंसर. 4.21. What? Okay, 20. Of mass something suspended by a string of length L1 is given a minimum velocity required to complete a full circle in the vertical plane at the highest point collides elastically with another ball of mass suspended by the string of length L2, which is initially at rest. The minimum velocity required to complete a full circle in the vertical plane at the highest point collides elastically with another ball of mass suspended by the string of length L2, which is initially at rest. Okay. If the second bomb after collision acquires the minimum speed required to complete a full circle in the vertical plane, then the ratio of L1 upon L2 is right. Okay, it's doable, I guess. So ऊपर क्या speed रहने वाली है minimum, which is v square upon r is equal to g, right? Tension equal to 0 अगर हो गया तो दोनों suspended at strings है. Yes, so tension at max 0 हो सकता है, which means like v square equal to rg or something. Yeah, must be the thing, right? It's provided by the gravitation force. Yeah, okay, that is the thing. So ऊपर है just v equal to square root of rg, और नीचे क्या है equal like that, it's square root of 5rg. So अभी इसको तुमने 5rg दिया है, yeah, तो अभी इसको sort of 5rg दिया, फिर तुमने इसको ऊपर भेज दिया, इसका मास m है, another mob उसका भी मास सेम है, उसकी लेंथ L2 है. ओके, उसकी वेलोसिटी तुमने सेम कर डाली, राइट? After collision acquires the minimum speed required to complete a full circle in the vertical plane. अच्छा, समझ. So like square root of, so वो same speed है ना, so like square root of r1g is equal to square root of 5, sorry, square root of 5, square root of r2g or L2 whatever is equal to 5 L1g. Yeah, that explains it. So हाँ ठीक है ना, L2 is equal to 5 L1, that makes sense. तो क्या चाहिए अपने को? L1 upon L2 is 1 upon 5, right? No, it should be L2 upon L1 because कुछ भी गड़बड़ हुई इसमें. Yeah, yeah, this highest point हो रहा है. So
oh shit, हाईएस्ट पॉइंट की स्पीड थोड़ी ना रहेगी वो. सो हाईएस्ट पॉइंट की, बट वेट, L21 L1 should be 1 of course because it's as if कि वो मास कंटिन्यू कर रहा है but actually वो मास नहीं. हाँ, it should be 1, so 20 का आंसर 1 आएगा. What is the thing? अलग क्यों होगा, right? Highest point which है. Yeah, I do the same thing as that. So हाँ, yeah, L1 upon L2 should be 1, otherwise ये काम ही नहीं करेगा. Okay. और क्या और क्या और क्या और क्या. 21 पे छोड़े लगता है बहुत सारे. 21 से 24 तक छोड़े. राइट, हाँ अपन ही छोड़े थे. ओके, ये हो गया. 25 समथिंग. हाँ, ओ या ओके, ये चीज़ वी डोंट नो अबाउट दैट. सो ये हो गया. लेट्स गो टू 13 क्वेश्चन. 13th is a particle of mass m positive charge, okay, charge q moving with constant velocity, something enters the region of magnetic field not normal to the xy plane. The region of magnetic field extends from x to 0 to x to L for all values of y 0 to L. Okay, so y after passing through this region, the particle enters on the other side, so emerges on the other side after 10 milliseconds with velocity something. The correct statement is R. क्या है इसकी U in 4I and then this is मैग्नेटिक फील्ड क्या है वैसे. नॉर्मल टू द एक्स वाई प्लेन, बट कौन से डायरेक्शन, क्या फर्क पड़ता है वट. एंड इट इमर्जेस विथ व्हाट, विथ यू इक्वल टू. सो इसमें कुछ भी जे कंपोनेंट भी है. सो जस्ट, हाँ ठीक है, ऐसा लगेगा ना 4 टाइम्स ऑफ स्क्वायर 3 अपॉन 2 आई प्लस 1 अपॉन 2 जे, सिर्फ ऐसा बोल दो. दैट्स द थिंग. सो हाँ, इट्स मेकिंग एंगल व्हाट, इट्स मेकिंग एंगल 30 डिग्री आई थिंक with horizontal जब ये merge करता है. It's actually this circular arc throughout. Okay, it's at some this. हाँ ठीक है, उसका जो acceleration is in this direction of course v cross p करना है. wait, इसका चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज. so it's positive charge मतलब कि real just v cross p. so then v is in this direction and then d is supposed to be in the lower direction. so downward चाहिए अपने को, तब ये ऐसा करेगा. राइट, एंड अपवर्ड इज एक्चुअली पॉजिटिव के है, मतलब कि अपने को along negative के हेड से करेगा. so direction of the field, magnetic field is in the negative z direction. so 13 का a तो है. अब एक a चला गया तो 13 का a. what else, direction of magnetic field is in, okay वो magnetic magnitude of the magnetic field is how much. ठीक है ना, करते. अब देखो टाइम भी दे दिया ना, देखो u तो दिया ही है, वो तो चेंज नहीं होने वाला. एंड yeah, we also got the time. so actually you can just figure out r because तुम्हें इनफैक्ट आर्क लेंथ ही देगी काइंड ऑफ इन अ वे. हाँ एक्चुअली मैं आर्क निकाल सकता हूँ. सो ये जो डिस्टेंस था x इक्वल टू 0 x इक्वल टू एल, अच्छा तो एल दिया नहीं इनफैक्ट, तो इसमें एल यूज भी नहीं कर रहे लगता. इट्स लाइक 10 मिली सेकेंड्स यू आर सेइंग. हाउ, सो इन दैट वे लाइक तुमने एक्चुअली such a magnitude was still 4 of course. So okay, 10 times 4 is this length, so it's 40. Oh god, it's the arc length. And actually you can figure out what L should be in that way. Cool. Actually तो पहले तो R निकालो, तो L क्यों करो इतना, पहले R निकालो. ये एंगल कितना 30 डिग्री, देन ये एंगल होगा 60 डिग्री, ये एंगल यहाँ पे 30 डिग्री होगा. so just pi upon 6 times of R equal to 40 meters. wait नहीं, मिली सेकेंड्स है ना. okay, so 4 times 10 power negative 2, right. so R will just be what, 24 times 10 power negative 2 upon pi. so देखो रेडियस मिल गया. Now all we want is what, the magnitude of the magnetic field. So what's the thing? Okay, this is centripetal force is, okay. So acceleration just v square upon r is equal to, and v square upon f, and that's equal to what, q times v, right? Yeah. So v is equal to, yeah, that has the thing of course. और क्या होगा? So v will just be m upon q times v upon r. Yeah. ओके, सो इसका मास है m, इसका चार्ज q है, एंड देन दैट इज ऑफ v अपॉन r. v जस्ट 4 अपॉन r इज दिस थिंग. सो जस्ट 24 ऊपर 100 भेज दिया,
अपॉन पाई whatever 11 जगह नीचे 6 मतलब कि m times oh it's like 50 upon 3 pi per dollar m upon q that's 50 upon 3 pi which is so yeah like 50 upon 3 pi which oh god इसमें है नहीं हाँ वो पाई ऊपर गया सॉरी yeah वो पाई ऊपर गया so it's 50 pi upon 3 sorry so it should be c in that case 13 का c ठीक है yeah next 14th two non-conducting solid spheres of radius r and 2r having uniform charge, uniform volume charge densities rho 1 and rho 2 touch each other. The net electric field at a distance 2r from the center of the smaller sphere. Okay, two non-conducting solid spheres touch each other. Net electric field at a distance 2r from the center of the smaller sphere along the line joining the centers of the sphere is 0. अच्छा क्या चार्जेस दी तुमने हाँ रेडियस भूल जाओ बेसिकली तुम्हारा डिस्टेंस कितना है 3r राइट ओके और तुमने चार्जेस रो 1 रो 2 दिए लाइक रो 1 अपॉन रो 3 हाँ ठीक है ना सो प्रोपोर्शनलिटी देखो नहीं आर क्यू देखना मेरे को इसमें 8 आ जाएगा इसमें जो चार्ज है इस प्रोपोर्शनल टू रो 1 और इससे प्रोपोर्शनल है 8 रो 2 के ओके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस 2r फ्रॉम दी व्हाट 2r फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्मॉल स्फीयर और ओह इट इज नेगेटिव वगैरह आ जाएगा ओके फाइन स्मॉलर स्फीयर कौन सा ये वाला सो 2r फ्रॉम देयर ओके कूल सो ये डिस्टेंस 3 है यहाँ पे ये 2 आ जाएगा विच मीन्स कि ये 5 हो गया कूल 0 what that means is like rho 1 upon 2 squared is equal to 8 rho 2 upon 5 squared right because yeah then rho 1 upon rho 2 should be so rho 1 upon rho 2 is just 8 times 2 squares like 8 times 4 which is 32 upon 5 squared which is 25 30.25 which is negative of course so B is the answer what is the answer ये अच्छा था इसमें एक ही आंसर हो सकता है ओके ऑसम कुछ और हो सकता है इसमें ना wait a second oh okay so 2 are दूसरी डायरेक्शन में seriously I can't believe that हाँ so wait ये डिस्टेंस r होगा और फिर उसके बाद में क्या होगा रेडियस r एंड 2r है राइट तो इसका फिर यहाँ पे r हो इसका तो अंदर चलेगा दैट्स नॉट गुड सो ये r था रेडियस एंड देन यहाँ पे इट शुड हैव बीन 2r बट अपन r अंदर जा चुके हैं तो ये बाहर का काम नहीं करेगा जस्ट दिस थिंग ओके कूल दिस इज r r r एंड ये जो चीज़ है इसका अब या ये इक्वल हो जाएगा मतलब यहाँ पे रो 2 चार्ज टाइप का है एंड यहाँ पे रो 1 आया सो व्हाट मींस लाइक रो 1 अपॉन या दोनों पुलिंग फोर्स चाहिए इन दैट केस ओके पुशिंग सो रो 1 अपॉन 2 स्क्वायर इज इक्वल टू रो 2 अपॉन 1 स्क्वायर राइट और सो इट सीम्स yes that should be the thing actually cool इसका तो क्या हुआ कि रो 1 अपॉन रो 2 कैन आल्सो बी 4 पॉजिटिव 4 सो डी इज आल्सो an option so 14 का डी आएगा 15th the circuit shown in the figure there are two parallel plate capacitors each of capacitance C the switch S1 is pressed first to the fully charged the capacitor C1 कौन सा इसमें fully charge किया then released अच्छा fine so यहाँ पे 2V potential आ चुका है switch S2 is pressed to charge capacitor C2 okay same potentials हो गए इसमें after some time S2 is released okay and then S3 is pressed after some time so हाँ ठीक है फाइनल स्टेट में राइट ओह गॉड ये इसमें ये कैसे आ गया ओके वेरी वियर्ड तो तुमने जो चार्ज लिया ओके ऐसा हो गया होगा एंड देन इसमें तुमने राइट निकाल लिया राइट फिर तुमने प्रेस किया S2 को और फिर तुमने इसको रिलीज किया राइट ओके very weird it's not like VC2 plus VC1 is equal to 2V naught right yeah must be the thing
तो v is just sorry 2v naught times c1 actually. So मतलब क्या हुआ कि it's just c1 upon c1 plus c2 times 2v naught. तो ये वोल्टेज था इनिशियली, राइट? या मतलब इस पे, अच्छा इसका जो वोल्टेज था वो तो वैसे ही रहेगा, इसको चेंज नहीं। C1 कैपेसिटर पे जो चार्ज आया है, it is this times C1, it's just C1 squared. Oh god, sure that must be the thing. See उसका वोल्टेज अभी भी वैसे ही रह गया है, या सो हाँ ठीक है ना। सो C1 squared upon C1 plus C2 times 2v naught, that is the charge on C1 now, और फिर finally in after some time जब तुमने S3, हाँ at least V naught C2, so charge on upper plate of, अच्छा ये उल्टा कर दिया इन लोगों ने। हु केयर्स, ये स्टिल अपर प्लेट में पॉजिटिव आएगा और फिर इसमें लोअर प्लेट में पॉजिटिव आएगा। अपर प्लेट ऑफ C1 इज 2CV नॉट, नो नो इट्स नॉट, नॉट नाउ एटलीस्ट, कुछ इसने शेयर किया ना। चार्ज इन अपर प्लेट ऑफ C1 is CV not, okay no don't do that. So yeah this have been a thing of course because ये पोटेंशियल फिर वैसे ही रह गया ना आइसोलेटेड। तूने S1 को प्रेस किया, देन रिलीज किया, फिर S2 को प्रेस किया, रिलीज किया, फिर तुमने S3 को प्रेस किया, राइट? या और क्या हो रहा है इसमें? ये चार्ज अपर प्लेट ऑफ C2 is 0. Why no, no, charge on the upper plate of C2 is negative CV naught. Yes, that's right. So D is correct. 15 का फिर D तो correct है. Okay. Otherwise कुछ और correct है नहीं because now it can't be 2 CV naught or CV naught. That doesn't make any sense. तुमने पहले S1 को किया, तुमने S2 को किया, right? नहीं, तुमने S1 को किया फिर उसको रिलीज किया ना, रिलीज किया, या सो अब ये इसका कनेक्शन चला गया, मतलब कि या ये राइट। सो ये ऐसा होगा ही नहीं, इट्स नॉट करेक्ट। इस पे जो कैपेसिटर पे चार्ज आएगा दैट इज C1 स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 टाइम्स 2v नॉट, व्हिच इज नॉट एनी ऑफ दीस थिंग्स। ओके नेक्स्ट क्या बचा है मेरा? ओके ये तो पूरा केमिस्ट्री था, मैथ थोड़ा बहुत बचा है स्टिल। सो 41 वेयर इज इट? इसे 4 मिनट में कर भी क्या हुआ? आई डोंट वांट टू डू दिस थिंग। melamine, do I even know that? Maybe I do, बस याद नहीं आ रहा क्या था वो, 3 नाइट्रोजन थे इसमें एंड समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो, याद तो मैं करता हूँ। ऐसे ऑक्सीजन भी इन्वॉल्व था, who knows? ये हो गया था अपना फिजिकल केमिस्ट्री में। कितने कम क्वेश्चन दिए इन लोगों ने, मैं कुछ कर ही नहीं पाया सारे इसमें। What is this thing? A tetrapeptide has COH group on aniline. Okay, aniline, उस पे क्या है ये? COH group. Okay, it's a tetrapeptide. Okay, यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी आएगा। Yes, there is in that as a thing. Okay, the product, sorry, this produces. Wait, ये tetrapeptide कैसे हुआ आखिर? Yeah, I don't see how that works. Tetrapeptide it is? No, it's just weird. I need to see. This is on complete analysis. For this peptide, tetrapeptide number of possible sequences, time is restricted to NH2 groups attached. So, okay, okay, बस मैं इसमें और नहीं कर सकता। ग्लाइसिन और ये मुझे नहीं करना है। Complete hydrolysis, ठीक है। Process this and that. What is the number of possible sequences, primary structures?
with NH2 group. अच्छा, 4 इसमें तुमने पेप्टाइड्स दे दिए मुझे। ये अमीनो एसिड्स कौन से ग्लाइसिन जो भी है, 4 अमीनो एसिड्स है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। कुछ और है इसमें? फॉर द टेट्रापेप्टाइड द नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रक्चर्स, जैसे ओके सीक्वेंस प्राइमरी स्ट्रक्चर्स विद NH2 ग्रुप अटैच्ड टू chiral centers। मुझे इतने कंपाउंड्स के आई डोंट नो हाउ वुड आई एवर डू दिस थिंग, आई हैव नो आइडिया। ये तो हो चुका है, ठीक है फिर और कुछ है नहीं करना अच्छा। सो 41 का मैंने करेक्ट हुआ था एंड देन टाइम बहुत खाया था। उसमें कुछ टू मिसिंग सेट नॉट से कोई पोजीशन ऐसा हो रहा है। और ये डिस्टेंस जो है दैट इज इक्वल टू दिस थिंग, ओके कूल। बस इतना ही है ना कि इसका जो रेडियस है दैट्स जस्ट या सेट नॉट का स्क्वायर, कोई भी उसमें तुम चूज कर सकते हो या लाइक वो जो वेक्टर रहेगा बट वो ओके ओके विद द राइट ओके starting to make sense, it should just be this thing। like यहाँ पे origin है, ये तुम्हारा z नॉट है, यहाँ पे तुम्हारा ऐसा सर्कल है, ऐसा सर्कल है, doesn't make sense, doesn't make sense, how to do that। ठीक है फिर बस और क्या हो सकता है, क्या है यार बहुत सारे रह गए मेरे। कितने रह गए मेरे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ 12 13 14 रह गए मेरे। बड़ा गुड स्कोर, फर्स्ट टाइम के हो गया। सो आप क्लैरिफिकेशन मैंने क्यों किया, क्योंकि मैं पेनेशिया वापस यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। या ये रीज़न है, दैट्स वाई अब मैं हर 5वीं तारीख पे ये चीज़ करने वाला हूँ। ओके यस 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 दिस दिस चेक कर लेते फिर इसको कितने गलत हुए, क्या हुआ है, क्या है यार सही नहीं हुआ। ओके फिजिक्स पहला बी है यस, ए फिर बी फिर डी फिर ए फिर बी, व्हाट सिक्स का बी यस, सेवन का ए, एट का डी, नाइन्थ का सी, टेंथ सी, टेंथ का गलत हुआ सी है ओके, इलेवंथ का बी सी गलत हुआ ये बी सी डी है फाइन, ट्वेल्थ का ए डी किया ही नहीं मैंने आई थिंक, या इसका किया ही नहीं ओके। अरे यार मैंने ट्वेल्थ क्यों नहीं किया, मैं कर सकता था, ठीक है। 13th का ए एंड सी दैट्स करेक्ट, 14th बी डी, 15th बी डी ओके, इसमें एक मार्क मिलेगा मुझे राइट। 16th वन, इसका नॉट ओह गॉड 4 बट मैंने 0.04 किया सो ये गलत हुआ। 18th का 5 यस, 19th का 8 हाउ, मेरा गलत हो गया तो 20 का 5 ये भी गलत हो गया, मुझे नहीं समझा ऐसा कैसे हुआ, ठीक है। 21 तो मैंने किया नहीं सो 25th डायरेक्टली विच इज ए, 27 सी ओके, 29 28 पहले से 28 का बी ओके फिर डी, 29 का डी है यार, ये मेरे गलत कैसे हो रहा है आगे। 30 बी ये भी गलत हो गया, 32 इसलिए मैं जनरली केमिस्ट्री करता ही नहीं हूँ, इसमें मुझे 2 मार्क्स मिलेंगे बिकॉज मैंने जो करेक्ट किया। 34th बी सी डी ओके, 35th ए, 38 what 8 yes, 40 का 5 yes, 41 it should be C किया नहीं मैंने, 42 का ओके गलत हो गया ए है,
44th C, 45th का B, 46th का A, 47th का B, 48th का A. What is this? AC. Okay, मैंने A किया है, so fine. ठीक है, ये करेक्ट हो गया. Okay, 49 का D, 50 C, yes, 51 AD, U का CD, मैंने A किया है, so I won. 53 का PC, 54 का AC, 55 का BD, 56 का क्या है? 6, yes, then 5, okay. Then 58 का 6 चाहिए, दिया मैंने. 59 का 9. So let's see मैंने कितने करेक्ट हुए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. वापस करता हूँ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33. मेरे 33 करेक्ट हुए आउट ऑफ 60. घटिया स्कोर है मेरा. ओके, और क्या है? कितने इनकरेक्ट हुए? 1 2 3 4 5 6 7. Wait, okay, sorry. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9. So 9 incorrect हुए. So yeah, the difference 4 12 12 1 3 2 minus 9. Yeah, तो क्या 1 2 3. मेरे 123 स्कोर है इस केस में. नॉट गुड यार. आउट ऑफ 180 मेरा सिर्फ 123 आया. डेफिनेटली नॉट गुड. चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम अच्छा होगा शायद. ओके देन, पेपर 2 भी है, मैं आज ही करने वाला हूँ. सो आई सी नेक्स्ट वीडियो. बाय.